Okay, guys, we will start this session after 5 to 10 minutes. Okay, so let others join the session. Okay, guys, and I hope I'm audible for Shubham and sorry, Fava. Guys, you can hear me? Guys, guys, I hope I'm audible to you guys. Please let me know if you can hear me. Please, guys, come on. And no one's speaking. Look, I'm not able to. Okay, you guys need to speak because the interaction is really important when we're doing the seminar or taking any kind of the session. So interaction is really important for us. Okay, so make sure you guys speak. Okay.
Guys, let's other join, then we will start. Okay. Okay, we will wait more 2 to 3 minutes, then we will start this session. ये वाली सिंगल रख नहीं है नहीं मेरी वाली ब्लैक वाली Okay, guys, let other join, then we will start this session. Okay, just give me just 1 or 2 minutes, then we will start. मन आगे गई थी प्लेस की दुकान आगे भी प्लेस की दुकान आगे सब्जी वाला अच्छा Okay, guys, I guess we should start our session. Okay, so guys, let's start this session, and I hope I'm audible to you all. Please let me know if I'm audible to you. Mr. Masood, you're not audible. Just okay. So let me just be clear before take this session. So you guys need to have really a clear interaction. You must speak and you must ask some questions to me. Without interaction, without conversation, this session is useless. Okay, so make sure you guys ask question, have query from your end. Okay. Okay, so let's start the session. Let me introduce myself first. Okay, my name is Amit, and I'm a senior, or you can say the Malware analysis in the cross cybersecurity. I also teach the reverse engineering, and currently I'm teaching students about the CTIA and the SOC analyst also. Okay, so
this session is going to be about very important because this session is going to contain about the malware analysis and why the malware analysis is really important for the CTI. And I hope, let me just clarify that what is the CTI. That is the threat intelligence, okay, or we can say the threat hunting. Both courses like different, okay, and but the similar thing is both cores have the really in-depth analysis about the malware. Okay, so guys, am I audible to you guys? Again, I'm asking. Yes, sir. Okay. So let's start this session, or we should wait 1 minute because keep student is joining. So we will wait for 1 minute and then we will start. Okay. This session gonna be really focused on mainly on the malware, like why we do the analysis, uh, okay, and why it's so important for the threat hunters and threat intelligence also. And once you applying a job, any kind of the organization like the Mindtree, Infosys, McAfee, Kaspersky, even the Microsoft, these companies are mainly hired these kind of the security positions. Okay. So, okay, we will wait 1 more minute and we will start. And I think Manish Kashyap, there is a one more student, Manish Kashyap. I know you. I think Manish, am I audible to you? Manish. Okay. See, this is what I don't really want in this session. If I'm asking someone like something, so you should reply. You should, speak. Otherwise, it's not be relevant for you guys if you don't dare to speak or don't dare to ask anything. So it's not relevant to you guys. Okay, so now I'm gonna start this session. Okay, so this session is about the CTI focused on the malware analysis. Okay, so what are the concept we're gonna cover on this session? We're gonna look at the overview, course overview, what the CTI is actually help you to decorate your security in any kind of the organization and how you can build your career inside the CTI as a CTI. Okay, so this is really a good course for you if you guys do enrollment for this course, and there's a highly chances that you gain the information about like how you can protect your organization and what kind of the major area and major keys area that you need to learn about those all the things. Okay, and yeah, so it is good to speak in Hindi or English both. Just let me know in the comment box. I mean, there is no comment box. I'm really sorry. In the message box or just speak. Both are is okay, not an issue. Okay, both is good. Okay, perfect. Okay, someone said Hindi, Shivam Kumar, Hindi, English, both. Okay, okay, okay. So I'm gonna use the both, I guess. So mainly I'm gonna, okay, we'll see. Okay, so let's talk about the CTI. Like, what is the course overview gonna be like? Okay, so we have the section here, as you can see on my screen, and
The section 1 contain the threat hunting introduction. As I'm going to explain, threat hunting introduction is related to the like how the threat is coming to your system and what kind of the threat is or traffic through the internet to your system or to your server or any kind of the organization. So this major area is you can cover even the SOC endpoint security inside that thing. Okay, so threat hunting mainly is a focus on the like how the threat is behaving. Okay, and how you're gonna identify the threat and what are the major point to identify like how it's gonna looks like. Okay, sometimes what happen once you're analyzing the threats, the thread trying to be very smart, they're trying to be looks and legit to our system, to our antiviruses, to our security team. But after they execute in our system, they expose their self. They sometimes they redirect their self to the malicious website. They sometimes to act like a dropping some exe file to our system or to our server. Okay, so this is what we're gonna cover in the section 1, like how and what kind of the techniques the thread actually use. Okay, and the second section we're gonna cover in the thread hunting methodology. Okay, so what are the methods we can hunt? Okay, any kind of this suspicious threat. There are many methods that the major methods are gonna be like the you should know how you do the analysis on the coming traffic or any kind of the file, or if you receiving any kind of the mail or any kind of the file, that that how you gonna analysis on those methods, and what methods approach by any kind of the hackers or any kind of the organization. So sometimes what happen, even the big organization is used to attack the other organization to not them grow properly, so they can grow and they can build their the reputation in the market. That's why the fight is keep going on between the organization, even the government. Sometimes government also involved in that thing. Okay, so we're gonna discuss the methods. What are the methods? Okay, so let me just clear one more thing. So this session is just gonna be about what you guys gonna learn if you enroll in the CTI course. Okay, and why you need to focus mainly on the malware analysis when you're doing even the CTI, even the CTH, even the reverse engineering or the SOC analyst. SOC analyst also need highly malware analysis skills. Okay, okay, guys. Okay, so next we have the network hunting. So network hunt is clearly the name is really clean. So we gonna hunt what kind of the network is coming. Okay, we need to try to hunt the network, and okay, we have a student coming in the session. Okay, I'm gonna repeat all the things in the last minute, in the last 10 to 15 minutes. So don't worry if you guys miss some information about the section 1 and section 2. Okay, so network hunting is all about how you're gonna analyze the network, and you should be very familiar about the protocols of the networks. Okay, so what kind of the protocols keep going on inside the network? So you have to need like in-depth knowledge about the network protocols. Okay, once you know these things, then we gonna jump on the section 4. Okay, and in the section 4, the section 4 is about the suspicious network traffic hunting. नाम से बहुत ही clean and clear है. ठीक है, any kind of the okay, Shubham Chaudhary is requesting. Okay, okay, suspicious network traffic hunting. And so नाम से ही बहुत ही clean and clear है. Any kind of the suspicious network. Okay, लाइक जो भी आपको लग रहा है कि यार ये तो सस्पिशियस लग रहा है मेरे को, ये कोई लिजिट रिक्वेस्ट नहीं है. ठीक है, अब उसको किस टाइप से आप स्निफ करोगे? देयर आर मैनी टूल्स. देयर आर द snort, there is a Wireshark also. So it's up to you. You can use any kind of the tools to snip the traffic, and you can look at the events, you can look at the packets, and you can analyze. Okay, and there is a really good key skill that if you know like all the network protocol. Okay, then
you are able to analyze those packets according to your needs, like what the suspicious networks looks like. Okay, sometime let me just tell you, there are many type of file that coming from the like from the attackers, or any kind of the who intentionally want to attack our organization or our system. So there are many key points that you can look in the packets, which is the like you can see the 200 okay, and then you able to see the text slash javascript. If you see this kind of the things, that means there is a script keep going on inside the packets. And then you have to look at the raw data. आपको raw data देखना पड़ेगा उस situation में. And there is another way, that is a text HTML. That means there is trying to redirect the website. And there is another key point, that application Java archive, this kind of things also indicating that is the suspicious, that is trying to running some script or command line script inside our system. Okay. And there is another which is called you can see the 302 found. Okay. And 302 found is like 302 is a like an error. It is indicating that is the move temporary. That means that is the redirection happening for that particular uh, packet or particular request. So sometime what happened once the redirection happened, that 302 take another link, and it will execute itself. So it is all about like it is bluffing our system. It's bluffing the security team to looks legit, but it's not that legit. So we have to analyze the suspicious network, what kind of the traffic it's coming in our system. So you guys can use we're gonna use the also Wireshark and Snort in this course. Okay. So next we have section 5, hunting web shell. Okay. So the web shell, if you guys know what is the shell, how many people knows about the shell? And anyone? Anyone? Guys, I need answer from you. If you don't know, then good. If you know, then speak out. I think it's a scripting based execution. Right. Okay. So we're gonna hunt down the web shell, like it is as the student said, the scripting type, and it's trying to execute itself in our system. Okay, that depend on that script can run through the PowerShell or command line. That depend on that thing. So we're gonna try to encounter that thing. We try to hunt that thing, and how we're gonna hunt that thing. That we have the lot of tool that we can use, like a process monitor, process hacker. Okay, we can analyze those things. Once the all the things happen, like let's us assume the suspicious traffic is like execute in our system, and they are successfully approach and compromise our system. Okay, Hindi. Okay. Okay. सो अस्यूम करो कि कोई भी हैकर है, उसने सक्सेसफुली हमारे सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज कर दिया. देन व्हाट द नेक्स्ट स्टेप, व्हाट आर गोना बी द नेक्स्ट स्टेप फॉर दैट पर्सन? That is the it gonna try to execute some shell, or that person is gonna try to execute or take over the our system, reverse shell लेने की कोशिश करेगा. Okay, so these kind of the hunting we're gonna start analyzing through the looking at the service. Okay, services देखेंगे हम, task manager में जाके देख सकते हैं कि कौन सी services run हो रही हैं. Okay, we can look at the process monitor and process hacker. These are the tools that I'm telling you, the process monitor and the process hacker. So इनके थ्रू हम देख सकते हैं कि हाँ कौन कौन सी सर्विसेज और कौन सी एक्सिक्यूटेबल और कौन सी स्क्रिप्ट्स रन हो रही है हमारे सिस्टम में. Okay, we can analyze those things, and we're going to try to hunt those things. And how we're going to hunt, and we need to well known about those things, like how they are looks alike. Okay, तो प्रोसेस हैकर की एक बहुत अच्छी बात है कि जब भी कोई हाईली सस्पिशियस है, या फिर कुछ भी कुछ ज्यादा ही स्पेस या रैम यूज कर रहा है, या फिर हमारा सीपी यूज कर रहा है, दैट इज हाईलाइटेड एज अ रेड. सो वहाँ पे कलर का खेल चलता है. ठीक है. तो यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट थिंग, लाइक हाउ व्हाई एंड हाउ इट ट्राइंग, आई मीन यूजिंग आवर सिस्टम सो हाईली. Okay, that's how. So in details, we're gonna, if we're gonna talk about in details about the web shell hunting, then it's gonna be, I'm gonna take like a lot of time, like 2 to 3 hours, I guess. It's just one topic.
And the next thing is the section 6 and the endpoint hunting. It's really clean and clear. Endpoints, it's all about like what kind of the techniques and what kind of the things, if you guys are familiar with the MITRE attack and the XDR and DR, okay, these kind of the things we're going to use in the section 6. So CTI is mainly about we can say the machine learning, okay, and we can focus on the, okay, just give me a second. Okay. Okay, just wait, hold on. So, okay, I'm talking about the section 6 endpoint. Okay, so yeah, I was explaining like why these are the things and why the CTI is containing these other things. So CTI is mainly is all about the machine learning, how machine learning in the sense of the malicious thing, like how you guys can identify the suspicious traffic, identify these suspicious or malicious services that is running in your server or the system. Okay, after that you can write down about that thing, any kind of the rule writing that in future if that kind of the traffic come, that you guys can capture those things, बहुत ही आसानी से कैप्चर कर लो इन चीजों को और निग्लेक्ट कर सको और डिलीट कर सको कि ये लिजिट रिक्वेस्ट नहीं है. सो इन द सॉक एनालिस्ट आल्सो दिस कम इन एक्शन. आपको इन सारी चीजों से बहुत ही फेमिलियर होना पड़ेगा इफ यू थिंकिंग अबाउट द doing a job, or if you're trying to learn about the SOC analyst, you're gonna become a SOC analyst, then again you have to know like how these are the things looks like कि सस्पिशियस नेटवर्क कैसे हंट करते हैं, ठीक है, सर एक और क्वेश्चन था मेरा यहाँ किस टाइप से नेटवर्क सिक्योर. जैसे कि कोई ओके गो ऑन. कोई प्रोसेस जैसे कि विंडोज की फाइल के थ्रू एग्जीक्यूट होता है, जैसे कि DLL host डॉट exe के थ्रू एग्जीक्यूट होता है और उसके प्रोसेस आईडी अपने को पता रहती है, तो उसको अपन आइडेंटिफाई कैसे कर पाएंगे कि ये मैलिशियस प्रोसेस है या फिर मतलब जेन्युइन रिपीट प्रोसेस. करो अपना क्वेश्चन. your voice was struggling, so can you please ask again? I mean to say that the process which is executed through the Windows OS file, right? So how can I identify Okay. that those kind of process, whether this is the genuine process or malicious process, if I have a process ID? Okay, if you have a process ID, how you gonna analyze those things? Okay, look, if though that process is creating any kind of the new registry key, okay, create registry key, or is modify, it is trying to modify anything in our system that is going to be the legit, but it's trying to create its own registry in our system, that you're going to be the suspicious about that thing. If you looks on that file, if that file is using any kind of the virtual allocation API, or any kind of the create process internal W API, okay, virtual protect API, that mean that is there is a highly chances that is going to be the malicious. You have to look at that thing in that file, a flag that is called the ERW, E for executable, writable, and readable. So you need to try to find out that flag. If that flag is present there, then you can say that is the suspicious, and that is the part of the static. Okay, and you have to need you need an evidence to verify those things, that you can say that is the virus or the suspicious, right? So for the evidence you have to go through the dynamic means I'm gonna come on that thing, hunting of the malware. Okay, why the malware analysis is really important, that's why I'm this is the session about. So in डायनामिक में सब कुछ क्लियर हो जाता है जब आप रन करते हो, ठीक है. प्रोसेस मॉनिटर पे आप कैप्चर कर सकते हो एक ट्राई, मतलब फिल्टर करके एक ही फाइल को, जिस टाइप का भी आपको फिल्टर करना है प्रोसेस को, सो वो आपको सारा डेटा बताता है कि हाँ भाई इस टाइप की रजिस्ट्री क्रिएट हुई है, यहाँ फोल्डर में इसने ये फाइल क्रिएट करी है, ये वाला डीएल इसने एम्बेड करा है, और ये वाला डीएल ये ट्राई कर रहा है मॉडिफाई करने के लिए, सब कुछ वहां हमें पता चल जाता है. बट इन चीजों को रीड करना आना चाहिए. Okay, and you can't just go and just check like okay, but you have to know all the things like how the modification looks like, how the creation is look like. Okay, if any kind of the service is dropping, or any kind of the we can say the any kind of the like extra, or the services that is embedded itself that is exposing, you can look in the process pointer. And if coming out the PID, so through the PID, you can go through the process monitor. We have the process monitor, that is a really good tool and really strong tool to analysis.
there is a tree process, or we can say the process tree. There you can look through the process ID. What kind of the process ID you are trying to or interested in to look. And if you click on that process ID, you can see on the bottom side all the commands, all the path, what kind of the registries or what kind of the DLS it's using. There you can be the clear. Okay. Okay. Okay, so coming out with the section 7, this is all about the hunting malware. Okay, so this part is really important, as I explained, for the SOC, for the endpoint, for the CTI, intelligent, I mean, threat intelligence, threat hunting, and reverse engineering peoples, and the network security. There are a lot of areas that you can you're gonna see that mainly they are focused on the malware. Okay, so we're going to discuss about the thing in details, like hunting a malware and how you can hunt down that the malware, if it's coming through the network, if it coming through the mail, if you have any kind of the sample, and how you can write down the a rule for that in future. अगर वो आता है तो उसको कैसे अपने सिस्टम को प्रिवेंट कर सकते हो उससे उस जो भी मालवेयर आपने एनालिसिस करा है. ओके, ठीक है. सो मेनली हु नोज व्हाट इज द मालवेयर. मालवेयर क्या होते हैं? आई मीन वायरस, मालवेयर, ट्रोजन, क्या क्या चल क्या रहा है ये दुनिया में? कोई बताएगा ये होता क्या है? इस भला वायरस वायरस कह सकते हैं, जो कि आपके सिस्टम को और इन्वायरमेंट को इम्पेक्ट कर सकता है. ओके, एनीवन एल्स? मसूद? वो आपका इंटरफेस इसलिए है कि जो उस टूल जिस टूल की आपने अटेंडेंस ओपन की है, अब्दुल मसूद, कैन यू प्लीज स्पीक? Anyone? Gopal, Naveen, Piyush, Sachin, anyone? Shivam? कोई तो बोलो. देखो यार, come on guys. Okay, okay, let me just again not again, I mean, okay, you guys joined this session because you're willing to learn about cybersecurity, right? I'm just guessing. Yes, of course, that's why you are here. Okay, so once you thinking to enroll, and if you're trying to build your career for the cybersecurity, then you have to, had that guts to ability to ask anyone uh, any question, and you need a guts to answer those questions. If it doesn't matter if it's wrong or right, but you need those guts. Okay, especially in cybersecurity, and not this especially in any field. Just keep those guts, and please, anyone else? And malware is kind of virus. Okay, affect system. You can speak. Come on, no need to be shy. No need to just type and on the messages. You guys have mic. Okay, no one, I guess. Okay, okay, fine, Gopal. Okay, except Gopal. Rajat Jaiswal, Sachin Kumar. कुछ कहेंगे? Okay, I think. Okay, so yeah, the Gopal and the Trivedi is right. The malware is kind of virus which affect I mean, our system. Okay, so आते कहाँ से? किसने सोचा ये malware, virus? आते कहाँ से? कौन करता बनाता है ये? किस पर्पस से बनाता है? किसी को कोई आइडिया? सर हैकर बनाते हैं. ठीक है, कौन? ठीक है, हैकर बनाते हैं. ओके, क्यों बनाते हैं? सर किसी की मशीन्स को हैक करने के लिए बनाते हैं. जब उनमें जैसे मशीन में कॉन्फ़िगरेशन इशू होता है ना, वो अगर नहीं मिलता है तो बना के मालवेयर बना के इंजेक्ट करके उसको डेटा स्टोलेशन, सॉरी डेटा स्टोलन और वही मनी. Okay, okay, perfect. And Gopal said come from the payloads. Okay, and why they make the payload, Gopal? There is a intentionally intention behind those payloads, and any kind of the suspicious script or the malicious script. Behind every malware, every virus have any kind of the intention. Okay, intentionally harmful, I mean harm बचाने के लिए बनाए जाते हैं. मेनली जैसे अभी एक स्टूडेंट ने बोला था कि हैकर्स बनाते हैं, राइट? सो
hackers बहुत तरह के होते हैं, ठीक है. Government can be act like a hacker also. Any kind of the organization, as I said before, कि government also involve होती है hacking में. Even the big organization also involve होती है hacking में, ठीक है. To get access of the, okay, you trying to say the victim, okay. Okay, so ये intentionally harm पहुंचाने के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है. क्यों बनाए जाते हैं intentionally? Because of reputation, a matter of the money, reputations, status, okay. Try to secure their own server, try to secure their own countries, even there are a lot of reasons. That's why they build the malware. And I hope you guys, I take the lot of session actually about this malware analysis, okay. So before I explain about these Stuxnet, so how many students heard about these Stuxnet that is done by the America on the Iran? How many people know? कितने जनों को पता है कि अमेरिका ने ईरान के ऊपर अटैक किया था थ्रू दी malicious और स्क्रिप्ट और malware के थ्रू? That is a really great example that government can involve there to hack another country to secure their own country. How many people know? Sorry, sir, I don't know. Okay, Mr. Trivedi. Masood, try to speak something. No need to be just keep quiet. Okay, no issue. Okay, so let's get back to this session. So hunting malware is really a great part for all the areas, all the cybersecurity areas, especially the as I explained, the SOC, endpoint, threat intelligence, hunting, and the reverse engineering, network security. These endpoint security also. So these fields are mainly going to be relatable to the analysis. Okay. So there are two types that you can analyze about the malware. Okay, so let me just explain. So two type of the malicious file can come. That is the एक होता है portable executable जिसको हम बोलते हैं कि execute हो जाएगी, open हो जाएगी, ठीक है. एक होता है non executable, non PE file. So mainly जब भी आप किसी इंटरव्यू के लिए जाओगे तो these are the things you're gonna face. The if you know about the PE file and the non PE file, have you done any analysis on the PE file and non PE file? Even the SOC analysis. Okay, so portable executable file नाम से clear है कि execute होती है, and non portable जो execute नहीं होगी. So anyone can tell me what are the portable and non portable? I mean portable.exe हो सकती है आपकी. Good. नॉन पोर्टेबल मीन्स कुछ प्रोसेस के थ्रू आपका कुछ मालवेयर इंसर्ट करना उसको आई थिंक. आपकी आवाज क्लियर नहीं है, से अगेन. मीन्स कोई प्रोसेस के थ्रू अगर कुछ ऐड कर लिया हो या इंजेक्ट कर लिया हो तो वो आपका नॉन उसमें आ जाएगा. फाइल्स कौन कौन सी होती है नॉन पी फाइल? पी फाइल तो डॉट ई फाइल हो गई, डॉट RTF हो गई, डॉट LNK फाइल हो गई, ठीक है. एंड नाउ लेट्स कम अप टू द नॉन पी फाइल. कौन सी फाइल्स हो सकती है नॉन जो एग्जीक्यूट नहीं होती? Good. PDF, doc file, and there are .exe. Sorry, Excel file. Good. .excel भी हो सकता है. Right. So these kind of the things, right, Gopal. So these kind of the files are going to be the non-PE file. Okay. So आपने सोचा होगा कि जब भी एज अ हैकर अगर सोचोगे अगर किसी बंदे को हैक करना है या किसी आई मीन कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें किसी एक बंदे को टारगेट करके आप इजीली हैक कर सकते हो यूजिंग नॉन PE फाइल इवन दी PE फाइल इवन दी थ्रू द लिंक that is fall in the network security that you're gonna send the link. Okay. So जब भी किसी भी for example let's say the financial person who just handling the financial report for the company, so आप उसको एक नॉन पी फाइल भेज सकते हो अपनी स्क्रिप्ट ऐड करके उसको, तो वो देखेगा नहीं कि क्या करना है इसका, वो सीधे ओपन कर लेगा एंड देन वंस ही ओपन देन his system and the we can say the organization I mean the measure of the system going to be the compromise because of that small mistake. Okay, so these are the things we're gonna analysis on the malware analysis basically. Okay,
So how we can analyze those things? So we have a lot of tools, and there are major techniques and tools we're gonna use for the analysis. Okay. So three types की हमारे पास techniques हैं. Okay. First is the static, second is the dynamic, and third we can say the hybrid, or we can say the code analysis also. Okay. And you can say the hybrid also containing the sandboxing. Sandboxing किस किसने सुना है? Okay, I guess no one. Yes, I have idea on the where VM and the hybrid sandbox, etc. And Windows provide its own sandbox. Good. Okay. So let me just explain the static. Okay, so static होता है जब हम फाइल को execute नहीं करते हैं, और without executing we trying to extract all the information. Like there are tools we're gonna use like the P Studio, and we have the PID, CF Explorer, and the P View. Okay, so these tools help us to identify the not identify, sorry, the extract the information from what kind of the files is trying to looks like, and what kind of the functionality it contain, किस type की functionality हो सकती है और किस type की information ये contain कर रहा है, including its hashes. Okay, and आप वो hashes को simply Aristotle पे copy paste कर सकते हो, and you can find out like what's exactly happening there. कि Aristotle ने identify करा है या नहीं करा है, then it's good. नहीं करा है, then RIP to you, because you're gonna do the analysis in depth. Okay, so P Studio, what we're gonna look in the static mainly. Okay, just give me a second. Okay, now good. So static, we're gonna use the P Studio, P View, as I said, and CF Explorer, and the P View, right? So there are P Bear also. Okay, so these are the tools that we mainly use for the statics, and we just trying to look at the malicious strings, any kind of the imports क्या होते हैं हमारे पास, any kind of the DLLs. अब DLLs बहुत ही मेजर पार्ट होता है किसी भी एप्लीकेशन को रन करने के लिए, किसी भी एक्सिक्यूटेबल फाइल को रन करने के लिए DLLs आर रियली इंपॉर्टेंट. सो किस किस को पता DLLs क्या होते हैं, फुल फॉर्म क्या होती है, बेसिकली होता क्या है DLLs, कौन सी बला का नाम है, होता क्या है? Okay, DLLs, anyone? Yes, sir. Okay, बताना चाहेंगे? DLS में से ज्यादा कंफर्म तो नहीं सर, डीप लर्निंग जो स्टूडियो में करते हैं. Okay, not bad. Anyone else? कोई तो बोलो. Okay, so DLLs dynamic link library, नाम से very बहुत ही clean and clear है. Dynamic link library, that mean it is providing a functionality to execute that file. Okay, without DLLs any kind of the executable file is useless. So any kind of the executable file you're trying to execute in your system, कोई भी executable file आप खोलने की कोशिश कर अपने system में, तो वो system के जो basics DLLs होते हैं, kernel 32.dll, so user 32.dll, OLE, and the Win9net, these are the system based okay, that our window provide. We can the supportive file. Okay, DLLs को हम बोल सकते हैं supportive file है, जो any kind of the executable file को run होने में help करते हैं. कभी आपने notice करा होगा कि कोई भी आपने गेम खेला होगा, I guess I'm just guessing, you guys are well familiar with the games, computer games and any kind of the games. Okay, जब भी आप उसको रन करने जाते हो आपने एरर देखा होगा कि मिसिंग DLL करके आता है. So that's why if you don't have that kind of the functionality in your system, functionality means उस टाइप का DLL नहीं है, और उस DLL के अंदर बहुत सारी फंक्शनलिटी होती है. ठीक है, जो मैंने अभी पहले बताया था कि वर्चुअल एलोकेशन, क्रिएट प्रोसेस इंटरनल W, प्रोटेक्ट, वर्चुअल प्रोटेक्ट, IP, oh sorry not IP, LP address, these are the APIs that is including the DLLs के अंदर की फंक्शनलिटीज है. ठीक है, तो ये चीज प्रोवाइड करते हैं DLLs उस एग्जीक्यूटेबल फाइल को एग्जीक्यूट होने के लिए. ठीक है, तो स्टैटिक में हम ये सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं थ्रू द P Studio आल्सो, CF Explorer के थ्रू भी देख सकते हैं, P View के थ्रू, और द P Bear के थ्रू भी देख सकते हैं. ठीक है,
अब यहाँ पे हमें आइडेंटिफाई बहुत सारी चीज होती है. लेट मी जस्ट शेयर माय स्क्रीन एंड लेट मी जस्ट शो यू. ओके ओके, स्क्रीन शेयर हो रही है ना, सबको दिखाई दे रही है. एंड मेक श्योर यू गाइस आंसर. अब आंसर दो यार, सब लोग, ऐसे नहीं चलेगा. Yes. यस करिए सर. ओके ठीक है. तो देखो अभी मैंने क्या करा, सिंपल पी स्टूडियो एक टूल है स्टैटिक का, सिंपल कुछ नहीं करा है, सिंपल टूल खोला डबल क्लिक करके एंड आई जस्ट ड्रॉप दैट थिंग इन आवर पी स्टूडियो. मैंने इसे रन नहीं करा है, आई एम जस्ट डूइंग दिस स्टैटिक, दिस इज कॉल्ड द स्टैटिक बेसिकली. ठीक है. अब यहाँ पे जितनी भी इंफॉर्मेशन आ रही है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है. दैट इज इंक्लूडिंग दी हैशेस MD5 SHA-1 एंड SHA-256. सो इन बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, अपने VT पे, VT इन द सेंस द वायरस टोटल पे स्कैन कर सकते हैं और इनको देख सकते हैं कि भाई क्या चल रहा है, कि मिलीशियस है या नहीं है. ठीक है. अगर वायरस टोटल पे आपको मिलता है कि हाँ ये तो मिलीशियस है, देन यू यू हैव अ अपर हैंड ऑन दैट फाइल कि ठीक है, हमें एडवांस में पता चल चुका है ये मिलीशियस है. अब इसको प्रूफ करना है हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए या मैनेजर के लिए, जो भी टीम लीडर है या फिर जो आई मीन सीनियर सिक्योरिटी टीम होती है जो रूल राइट करती है, उसको बताना भाई ये तो मिलीशियस है, देख लो अब क्या करना है. ठीक है. अब उनको बताने के लिए एविडेंस प्रोवाइड करने हैं, वो एविडेंस आप भी प्रोवाइड करोगे. ठीक है. ठीक है. तो उसके लिए सबसे सर बहुत एक जरूरी चीज क्वेश्चन था है. मेरा. हाँ. हम्म. सर समटाइम जैसे कि आप बोल रहे हो वायरस पोर्टल पे आप चेक कर लेते हैं तो हैश वैल्यू, तो समटाइम वो व्हाइट लिस्ट बताने के बाद भी उसका रिलेशन में जैसे कि उसका मलेशियस बताता, तो उसका क्या मतलब एग्जैक्ट मीनिंग होता है वो? आई जस्ट वांट टू नो दैट. सो लुक, सो वायरस टोटल पता है क्या है. वायरस टोटल एक वी कैन से द कम्युनिटी पोस्ट है, एक तरह का प्लेटफॉर्म है, बहुत बड़े प्लेटफॉर्म है. ठीक है. वहाँ पे आपको पता चल जाता है कि इफ इट्स क्लीन एंड क्लियर बट स्टिल समहाउ सेइंग द एज यू सेड कि बता सकता है कि सस्पिशियस है या फिर इंडिकेट कर रहा है कि ये हो सकता है. सो नाउ इट्स अप टू यू कि भाई नो सर, वायरस एक्चुअली टोटल पर रिलाय इसके होना जो है जब. हम्म. मतलब जो एंटीवायरस वेंडर जो है वो व्हाइट लिस्टेड बता रहे हैं उस फाइल को या फिर उस हैश वैल्यू को, बट somehow वो relation whenever I'm just checking that it's showing some virus, I mean it's showing some malicious relation through this file है. तो वो क्या ओके एग्जैक्ट वो ओके, आई समझना गेट इट, चाह रहा आई हूँ. गेट इट. Okay, I get it. So look, that kind of the situation I also encounter when I'm doing the job. Okay, so ये क्या होता है बेसिकली, समटाइम्स जो हम कंपनी के थ्रू जो भी सॉफ्टवेयर या जो भी एप्लीकेशन यूज करते हैं, ठीक है, तो समटाइम क्या करता है वायरस टोटल और हमारे जो एंटीवायरस होते हैं वो एज अ मिलीशियस उसको बता देते हैं कि भाई मिलीशियस है, बट वो होता नहीं है. ठीक है. वेंडर्स के अकॉर्डिंग वो क्लीन एंड क्लियर है, बट जो जो रिजल्ट आता है, फाइनल रिजल्ट आता है, वो दैट मीन थ्रू दी एंटीवायरस इट कैन बी और थ्रू दी एनी काइंड ऑफ द सिग्नेचर बेस्ड. ठीक है. वो मिलीशियस आता है. रीजन वो जब भी हम स्कैन करते हैं, ठीक है, या जब भी हम देख सकते हैं कि वो फाइल हम रन करते हैं वो मिलीशियस आइडेंटिफाई कर देता है. रीजन क्या है, दैट मीन जो भी उसका डेटाबेस है, जब भी आप रूल राइटिंग करते हो तो रूल राइटिंग में आप क्या क्या राइट डाउन करते हो, उसके हैशेस. ओके. आप उसके स्ट्रिंग्स, जो जो स्ट्रिंग्स आपको मिलीशियस लगती हैं, ठीक है, बेस एड्रेस, एंट्री पॉइंट्स, दीज आर द थिंग्स. और ये जो हम मतलब फीड करते हैं जब रूल राइटिंग वगैरह सिग्नेचर राइट करते हैं, तो देर आर हाईली पॉसिबल कि सेम यहाँ पे 1000 मिल जाएंगे आपको. अगर स्ट्रिंग्स आपने फाइंड आउट करके रूल राइट करना चाह रहे हो तो देर आर मैनी फाइल दैट इट इज सिमिलर. ठीक है. तो समटाइम यही रीजन होता है कि वो ऑलरेडी उस टाइप की स्ट्रिंग्स दैट इज कंटेन बाय द एंटीवायरस और द सिग्नेचर, सो दैट्स व्हाई दैट इज शोइंग अस द मिलीशियस, बट वो मिलीशियस नहीं होता है. राइट. सो उसके लिए क्या करना पड़ता है, फिर हमें करेक्शन करना पड़ता है. वी कान करेक्ट ऑन द डेटाबेस, that is the global database, we can't correct that thing. So we try to neglect that thing or we try to correct that thing on our we can say or from our ends. Yes. Okay. So that mean, so let me just give you a clean answer regarding this thing. So that is the highly possible that you can encounter that thing. Okay. ये आपको लगेगा कि यार मेरी तो फाइल क्लीन है, ठीक है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड कर रखा है, बट ये सस्पिशियस आ रहा है, वायरस दिखा रहा है. सो दैट हैपन बिकॉज ऑफ द सिग्नेचर. ठीक है. वो दैट मीन कहीं ना कहीं वो सिमिलरली सिग्नेचर शो कर रहा है और कहीं ना कहीं वो मैच कर रहा है ऑफ दैट देयर इज स्ट्रिंग बेस और एनी काइंड ऑफ द इंपोर्ट्स टाइप्स
okay, or any kind of the execution process or any kind of the process is going on, that is like finding that kind of the similar thing, that is rule written. Clear है ना? Yes, sir. Okay. So okay, so in the P studio we were discussing about the static. So P studio में हम क्या क्या देख रहे हैं यहाँ पे? That is the first byte hacks. Okay, and we have the MZ. Okay, so यहाँ पे जो बहुत important चीज है, that is the 4D5A that you can see here on my screen. Okay, anode कहाँ गया anode? Can't find anode. Just hold on. Okay, there is no anode. So as you can see here, that the 4D5A90, right? 4D5A. So that is indicating a PE file indication. Okay, that is the indication of the any kind of the PE file. So even if you doing the analysis, अगर आप analysis कर रहे हो on the network, कोई भी traffic आप और traffic बोल रहा हूँ, कोई भी packets को analysis कर रहे हो, अगर उसके raw data में आपको 4D5 है या MZ करके मिलता है कुछ, तो वहाँ पे clearly आपको indication मिल जाती है that is trying to download or drop some portable executable file that gonna be executed on system. Okay, so वहाँ पे हमें हाईली सस्पिशियस होना है और उसको या तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन या फिर उसके बारे में रिपोर्ट राइट करके लिख लेते हैं कि ये ट्रैफिक है, जो भी प्रोटोकॉल के थ्रू आ रहा है, जो भी पोर्ट है, जो भी सोर्स और डेस्टिनेशन है उसका, ठीक है, वो सब नोट डाउन करके रख लेते हैं. सो दिस इज द क्लियर इंडिकेशन ऑफ द malware analysis, not the malware analysis, sorry, the malicious portable executable for the network side, also for the normal malware analysis. Okay, so next is really important things. As you can see, the entropy अगर 6.9 के above है, ठीक है, तो packed, I hope you guys are well familiar कि packed किसे बोलते हैं, नॉन पैक्ड किसे बोलते हैं. packed means कि इसके साथ एक और फाइल है, ठीक है, there are a lot of processes gonna be there. Okay, non packed means if it's below 6.9 then it's non packed. तो packed नहीं है, सिंपल एक फाइल है, सिंपल तो नहीं है, एक फाइल है, अकेली फाइल है, वही खेल करने वाली है हमारे सिस्टम के साथ, सिंपल, ठीक है. So why I'm teaching you this, why I'm telling you these are things, why this malware analysis is really important, because of through these analysis you can write down the rules, you can make the indicators, or you can write down the we can say the there is a term called rule writing, rule writing, ठीक है. तो उस इनके बेस पे आप वो राइट डाउन कर सकते हो, एंड यू कैन प्रोटेक्ट योर ऑर्गेनाइजेशन इवन ऑन योर सिस्टम थ्रू दोज आर द थिंग्स. ओके, सो देखो पी स्टूडियो में है तो बहुत कुछ पढ़ाने को, समझने के लिए इन डेप्थ में. सो let me just jump on these strings. Okay, so we have the libraries. So there are the lot of libraries that indicating what kind of the libraries is getting used. So these are the DLLs is trying to use. So अकेले single file है ये, ठीक है, इसके साथ कोई DLL नहीं है. So that is using our window based DLLs, and these are the tools that is trying to modify or trying to use a malicious activity. Okay, so that's why according to the P studio data, that is the highest marked और फ्लैग्ड. ओके, ठीक है, तो इनके बेसिस में हम सर्च कर सकते हैं कि भाई इंपोर्ट्स जो है वो भी सस्पिशियस है, ठीक है. अगर सपोज यही फाइल अगर हमारी लिजिट होती, बट इट इज शोइंग दैट दोज बोथ डीएल्स इज सस्पिशियस अकॉर्डिंग टू पी स्टूडियो डेटाबेस, बट आवर फाइल इज लिजिट, क्लीन एंड क्लीन एंड क्लियर, ठीक है. तो उस केस में हम क्या करेंगे, वी कैन नेग्लेक्ट दोस थिंग और वी कैन ट्राई टू एब्जॉर्ब लाइक उसकी प्रोसेस कहना क्या चाहती है, कर क्या रही है. अगर वो लेजिट वर्क करिए देन वी कैन नेग्लेक्ट दोस थिंग्स. तो यही समटाइम क्या होता है, जैसे ईओपी है, माइक्रोसॉफ्ट 365 प्रोवाइड करता है ईओपी. ओके, तो उस बेसिस के सॉफ्टवेयर पावर बाय रहा, ठीक है, तो वहाँ पे हमें बहुत सारे इंडिकेशन मिल जाते हैं, फॉल्स इंडिकेशन की भाई ये तो लेजिट है बट स्टिल शोइंग दी मलिशियस. सो उस केस में हम क्या करते हैं, या तो एनालिसिस करके उसको वेरीफाई कर लो, ठीक है, या फिर वेरीफाई करके फिर अपने अकॉर्डिंग एक्शन ले लो कि क्या करना है, क्या है, ठीक है. अगर यू द वन जूनियर देन यू हैव टू नोट, अपने सीनियर्स को बताना पड़ेगा कि भाई ये चल रहा है हिसाब किताब, क्या करना है, मैंने एनालिसिस कर लिया है. अब
वो ही बता देगा कि निगलेक्ट करना है या नहीं करना, सो यू कांट यू डोंट हैव दैट मच हेडेक ऑन योर हेड। ठीक है, तो लेट्स जंप ऑन द स्ट्रिंग्स। सो स्ट्रिंग्स आल्सो इज गोना बी इम्पोर्टेंट बिकॉज स्ट्रिंग्स ही मेनली जो है फोकस रहती है कोई भी कमांड लाइन को बाईपास करने के लिए। ठीक है, सो यहाँ पे हमें आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि बेसिकली क्या चल रहा है स्ट्रिंग्स में। ठीक है, सो CTI, I mean intelligence one and hunters and the SOC analysts are trying to look at the strings, are trying to look at the raw data, what's exactly going on in basis of the like plain text कि plain text में हम क्या readable कर पा रहे हैं। अगर वहाँ पे हमें कुछ suspicious मिलता है then we can note down and we can reconfirm in the dynamic and we can say that is the suspicious. If it's not, then we are clean. Okay, I hope सबको समझ में आ रहा है ना कि malware analysis क्यों important है CTI के लिए, because that is help you to just wait. Just give me a second, please. Okay, just give me guys one minute. Okay. Okay, सबको समझ में आ रहा है ना? यस सर। Okay. अगर कोई query हो तो you can ask. Okay. And if I'm wrong somewhere, if you think सर तो गलत बता रहे हैं, so you can also बता सकते हो कि सर आप तो गलत है, कहाँ के टीचर आ गए हैं। ठीक है, so you can also notify me. Okay, just give me a minute, please. Okay, राजकुमार आपने लेट ज्वाइन करा है। Okay, no issue. I will, cover all the things in last 10 minutes, but be focused. कि चल क्या रहा है? Try to absorb the things. Okay, just give me 1 minute, guys. ठीक है, let's start the session again. सर एक चीज पूछा था कि ये जैसे कि अनसाइन एप्लीकेशन का इन्वायरमेंट में इम्पैक्ट क्या फिर कॉम्प्रोमाइज होने का कोई चांस रहता है क्या अनसाइन एप्लीकेशन हो तो? अनसाइन एप्लीकेशन है तो एनवायरनमेंट पे इफेक्ट होने का खतरा रहता है या नहीं रहता है, ये पूछ रहे हो? यस, और वो एप्लीकेशन कॉम्प्रोमाइज होने का कोई चांस रहता है क्या? There is highly chances because it's yes, of course, my answer is yes. रीजन क्या है इसके पीछे? ठीक है, अब कोई भी फाइल है फॉर एग्जांपल, ठीक है, एंड ठीक है, आपकी आवाज कट कट क्या रही है? आई थिंक इट्स माय नेटवर्क और योर नेटवर्क। माय नेटवर्क इज गुड, आई गेस। You were saying something, please say something. I mean, you were asking something again. पूछ सकते हो दोबारा से? Only one person is asking question. There is no other people. Okay. ठीक है, चलो कंटिन्यू करते हैं। So ये जो टेक्निक्स हैं स्टैटिक्स, ठीक है, ये हेल्प कर रही है स्टैटिक के लिए। सिंपल स्टैटिक मतलब कि जो अपर इंफॉर्मेशन है, जो रो डेटा से हम इंफॉर्मेशन कंटेन कर सकते हैं, वो उसके लिए। ठीक है, उसके अलावा नहीं। तो उस बेसिस पे क्या होता है, जो हमारे इंटेलिजेंस होते हैं, जो हंटर्स होते हैं, वो आफ्टर डूइंग द स्टैटिक एनालिसिस दे विल कंक्लूड एंड दे विल कम विद यू नो द आंसर कि हाँ भाई इसको आगे फर्दर प्रोसेस करना है या नहीं करना है। इफ इट्स सीम्स लाइक सस्पिशियस, अगर ये दिख रहा है कि हाँ ये कुछ कांड करने वाला है, कुछ होने वाला है इसके थ्रू, देन दे विल प्रोसीड, अदरवाइज दे विल स्टार्ट neglect those all the files, useless file. बट मेनली जो हंटर्स होते हैं और जो इंटेलिजेंस होते हैं, दे आर डूइंग द पूरी भी आई मीन पूरी एनालिसिस करते हैं इन द सेंस बिकॉज दे नीड टू राइट डाउन दी रूल्स रिगार्डिंग दैट थिंग। ठीक है, और इन CTI में हमारे इंटेलिजेंस में हमारे पास बहुत सारी लैब्स हैं। सो
labs भी कुछ नहीं है. It is it's kind of the useless things, I guess, because in the CTI they just use the Wireshark process monitor, some kind of the malicious traffic, and also they use these samples and they use the report that is sent by the malware. ठीक है, उनकी जो रिपोर्ट सेंड होती है उनके बेसिस पे वो रूल राइट करते हैं और फिर वो आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि इसके टेक्निक्स क्या है. ठीक है, टेक्निक्स एंड टूल्स कौन से यूज कर रखे हैं. ठीक है, उसको एग्जीक्यूट होने के लिए उस फाइल को. सो उस बेसिस पे वो फिर वो रूल राइट करते हैं कि भाई आगे से इस टाइप की अगर कोई चीज आती है तो वी विल प्रिवेंट आवर सिस्टम. ओके, सो स्टैटिक हो गया विदाउट एग्जीक्यूट. तो डायनेमिक क्या होगा, कोई बताएगा? उसको टोल को हमने बता दिया कि हाइफन ये ऊपर यूआरएल भाई यूआरएल ये है और जो जिस मैं दे रहा हूँ इस टाइप करो जो वर्ड्स मैच करते हैं. रिपीट करना सर एक बार, क्या पूछ रहे हैं? अगर स्टैटिक हमारी विदाउट एग्जीक्यूशन हो गया तो डायनेमिक हमारी कौन सी टेक्निक्स एंड आई मीन कौन सी टेक्निक्स हुई. डायनेमिक में हम क्या करते हैं बेसिकली मेनली आप इस लिस्ट में टेस्ट करो जो वर्ड्स मैच करते हैं वो रिटर्न करो. रूल्स होते हैं डायनेमिक में. Okay. Okay, let me just repeat my question. स्टैटिक में हम एग्जीक्यूट नहीं करते हैं. विदाउट एग्जीक्यूट हम फाइल को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं. फिर डायनेमिक में हम क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे या फिर विदाउट एग्जीक्यूटिंग ही चलेंगे? एग्जीक्यूट होगा. ये विदाउट एग्जीक्यूट भी चेक कर सकते हैं अपन. ठीक है. सो डायनेमिक बेसिकली हमें क्या करना है, एग्जीक्यूट करनी है उस फाइल को और चेक करना है, एविडेंस फाइंड आउट करना है जो हमने स्टैटिक में फाइंड आउट करे हैं. ठीक है, जैसे कि स्क्रीन पे दिख रहा है पिंग करने की सोच रहा है ये 1.1 पॉइंट नंबर ऑफ टाइम 1 एंड हाइफन w वेटिंग ऑफ टाइम होगा 3000 समथिंग. इट कैन बी द मिलीसेकंड और आई डोंट नो. And then after that it's showing the null. Okay, and if you look down there is a Mozilla user agent, Mozilla 5.0 and these other things. So we're gonna trying to reconfirm these things कि भाई ये जो information हमें मिली है वो डायनेमिक में है भी या नहीं है. ये सिर्फ ऐसी हमें बेवकूफ बनाने के लिए, हमें मतलब धोखा देने के लिए रखी है. ठीक है. Okay. तो वो हम डायनेमिक में एविडेंस कैप्चर करने की कोशिश करते हैं, उसको रन करते हैं हम एक सेफ एनवायरनमेंट में. अब सेफ एनवायरनमेंट बनाना पड़ता है एक लैब. We can't just run in our main machine because it can be anything. It can be the ransomware, it can be any kind of the virus. ठीक है, तो उसके लिए हमें एक लैब प्रोवाइड कर जाती है. हर एक कंपनी एक सिक्योर लैब प्रोवाइड करती है. ठीक है, तो उसमें हमें इसको एग्जीक्यूट करना होता है थ्रू देयर आर लॉट ऑफ टूल्स. यू कैन यूज द फेक इंटरनेट, inet sim, you can use the process monitor, you can use the process hacker, you can use the TCP view, you can use the Wireshark, you can use the snort. So these all the tools help you to identify even the networks related, even the system base. Okay, so इनको आइडेंटिफाई करने में ये हेल्प करते हैं. ठीक है, जब हम एक क्लीन एंड क्लियर आंसर देता हूँ. देखो, अगर आप CTI सर्टिफिकेशन करने की सोच रहे हो देन यू मस्ट बी फेमिलियर अबाउट ऑल द थिंग्स. ऑल द थिंग्स मीन्स कि भाई हैकर्स किस तरह से सोच सकता है. ठीक है, और क्या क्या पॉसिबली वे हो सकते हैं. ठीक है, और अगर हम मालवेयर एनालिसिस तो आनी चाहिए, दैट इज द मेजर पार्ट. ठीक है, अगर आपके पास कोई फाइल आती है तो उसको एनालिसिस करने में आई मीन परफेक्ट होनी चाहिए कि भाई एनालिसिस करके उसके टेक्निक्स उसकी फंक्शनैलिटी क्या है उस बेस पे फिर आप रूल राइट कर सकें. ठीक है, सो डायनामिक एक मेजर पार्ट है स्टैटिक के बाद कि ओके इस पर एक क्वेश्चन है मेरा. ओके, क्वेश्चन ओके आस्क. सर जैसा कि वो आपने अभी बताया कि हैकर्स मतलब किस लेवल पर सोच सकते हैं, तो सर एक वन थिंग आती है मेरे को कि हैकिंग होती तो किसी न किसी तरीके से वो लोग हैक कर रहे हैं, मलेशियस हो गया या पेलोड कुछ भी चीज वो सेंड करते हैं तभी हो सकता है वो चीज. तो ऐसा हो सकता है क्योंकि फ्रीक्वेंसी बेस्ड या वायरलेस के थ्रू हैकिंग हो सके. फ्रीक्वेंसी के थ्रू देखो, look, there are many way that you can hack, but a frequency based that you can interrupt the signal, I mean not the signal, interrupt the service, but you can't hack. Okay. You need to give some a piece of code, you need to give some piece of commands that you can take over that system. So I don't think so with a frequency you can hack someone. No, you just can interrupt those services, that's it.
बट नहीं तो अगर मतलब हमें ये है कि जैसे कि हमें किसी का एंड्रॉइड हैक करना है तो उसके में हमें या तो कोई एपीके फाइल या कुछ भी तरीके से वायरस या पेलोड कुछ सेंड करना पड़ेगा। पर अगर हम चाहें कि हमें कुछ सेंड ना करना पड़े विदाउट हमें वायरलेस के थ्रू हम उसके सामने वाले के एंड्रॉइड को एक्सेस करना चाहें वायरलेस के थ्रू बिना कोई चीज सेंड करे, तो ऐसा हो सकता है? That is called fileless virus. That is no. That is still you need to say, send some bunch of binaries, malicious binaries. That you need to send some malicious binaries. Without binaries, you can't compromise other system. So fileless virus basically क्या होता है? You are using the other application weakness against itself. Then that can be the compromise. Otherwise, no. अगर ऐसा करना हो तो हमें उसके नियर बाई जाना पड़ेगा, उसकी रेंज में। जैसे उसका ब्लूटूथ ऑन है मोबाइल का, तो वी कैन हैक। Who told you this thing? That is called sniffing. ठीक है, हैक नहीं कर सकते without sending any kind of the malicious binaries with the code. You can't hack anyone, guys. You have to interact with that system. You have to, perform some binaries. Without binaries, you can't. ओके ओके। Okay. ओके So सर। that you talking about कि उसके रेंज में जाके, that is called sniffing. भाई उसके नेटवर्क पे कनेक्ट हो जाओ, ठीक है। और there are a lot of software that is doing movies में भी दिखाया जाता है कि भाई एक फोन लिया, तो आप उसके पास के फोन में रखा है, then it is everything is cloning, that we can say that clone हो गया. So that is a different kind of, that is still you doing some, that is you still using some suspicious or not the suspicious, I mean malicious binaries to the system. ठीक है, तभी वो कॉम्प्रोमाइज होगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। ठीक है। सो लेट्स बिगिन विद द डायनामिक। सो दोनों को क्लियर हो गया ना कि भाई फ्रीक्वेंसी, ये तो हो गया ना क्लियर? यस सर। ओके, ठीक है। तो व्हाट इज स्निफिंग? राजकुमार, कौन बताना चाहेगा स्निफिंग क्या होती है? स्निफ कौन बताना चाहेगा? अच्छा ठीक है, Capturing the data. क्या? Capturing the data. ओके एंड ओके गुड। सर नेटवर्क ट्रैफिक को इंटरसेप्ट करना। तो आई थिंक राजकुमार यू गेट योर आंसर। भाई अरे सिंपल यार, एक सिक्योरिटी डॉग ले लो, ठीक है। वो क्या करता है? स्निफ करता है कि भाई कहाँ उसको ड्रग्स या फिर कोई बॉम्ब वगैरह की स्मेल आ रही है, ठीक है। तो उसको फाइंड आउट करने की सोचता है, ठीक है। तो यू जस्ट कैप्चरिंग ऑल द डेटाज एंड यू ट्राइंग टू यू नो एनालाइज दोज थिंग्स, लाइक हाँ भाई क्या चल रहा है, क्या क्या इंपॉर्टेंस है मेरे लिए, ठीक है। तो दैट कॉल द स्निफिंग। ओके, सो लेट्स गेट बैक टू द डायनेमिक। सो डायनेमिक में हम क्या, एक एग्जांपल देता हूँ डायनेमिक करने से पहले। तो मैंने बहुत बार एग्जांपल दिया है ये, कि लेट्स से एक स्ट्रेंजर पर्सन है, ठीक है। अब आप उससे फ्रेंडशिप बिना करे आप उससे क्या क्या इन्फॉर्मेशन निकलवा सकते हो? उसका नाम, ठीक है, और कुछ बंच ऑफ थिंग्स निकलवा सकते हो बस, ठीक है। बट यू कांट जस्ट गो इन डेप्थ कि भाई उसकी फैमिली में क्या चल रहा है, उसकी कोई गर्लफ्रेंड है या नहीं है, या फिर उसने क्या एजुकेशन में क्या करा है, ठीक है। तो यू कांट जस्ट टेक आउट दीज ऑल द इन्फॉर्मेशन, वही कितने नंबर आए हैं, मैथ में कितने नंबर आए हैं, ठीक है, किसमें परफेक्ट है। तो यू कांट जस्ट grab those information without you become a friend. So the same thing, स्टैटिक क्या है? सिंपल, हम क्या कर रहे हैं, हैंडशेक कर रहे हैं, भाई मेरे को बता दे नाम क्या है तेरा, क्या क्या मतलब कहाँ रहते हो, बस इतना कुछ अपर नॉलेज। अब जब आप उसके फ्रेंड बन जाओगे, दैट मीन दैट इज नाउ ओपन टू एक्सपोज इट सेल्फ, राइट। सो द सेम थिंग, हमने फेमिलियर एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर देंगे, रन कर देंगे, उसको लगेगा कि भाई ठीक है, यही चीज़ मेरे को चाहिए थी, ऐसे ही एनवायरनमेंट चाहिए था, इंटरनेट भी रन हो रहा है, एक रियल सिस्टम भी मिल गया है, सारी सर्विसेज भी यहीं पे। अब एक्सपोज करता हूँ जो जो मेरे को, जहाँ मेरे को ड्रॉप करना है, जो भी हिसाब किताब, वो मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। सो देयर इज अ हाईली चांसेस कि जो स्टैटिक में आप स्ट्रिंग्स या फिर त्रिवेदी, कैन यू म्यूट योरसेल्फ प्लीज? ओके, नो गुड। सो
डायनेमिक में ये होता है वो एक्सपोज करना स्टार्ट कर देता है खुद को, एंड नाउ इट्स अप टू अस कि भाई वो जब एक्सपोज कर रहा है तो हम सारी चीजें अच्छे से कैप्चर कर पा रहे हैं, सेव कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। अगर वो नेटवर्क यूज करने की कोशिश कर रहा है देन इट मीन दैट इज ट्राइंग टू इंटरेक्ट विद आवर नेटवर्क ट्रैफिक्स, और दैट इज ट्राइंग टू इंटरेक्ट विद आवर फेक इंटरनेट और आईनेट सिम, राइट। सो उस केस में वायरशार्क पैकेट्स बनाएगा, ठीक है। अब जब भी कोई सर्विस स्टार्ट या रन हो रही है उस केस में हमारा प्रोसेस मॉनिटर कैप्चर करेगा। सो लेट मी शो यू द प्रोसेस मॉनिटर। दिस इज द प्रोसेस मॉनिटर, ठीक है। सो यहाँ पे हर एक फाइल कैप्चर हो रही है, ठीक है, कि भाई कौन सी सर्विस रन हो रही है, कौन सी रजिस्ट्री की क्रिएट हो रही है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो रीड फाइल हो रही है, और यहाँ पे हमारे पास बॉक्स है दैट इज फॉर रजिस्ट्री, फोल्डर किस टाइप के बन रहे हैं और नेटवर्क एक्टिविटी किस टाइप। यहाँ पे आप देख सकते हो भाई क्या चल रहा है। अब इसको आप फिल्टर आउट कर सकते हो एक स्पेसिफिक नेम देके, ठीक है। तो आप एक डायरेक्टली जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से नवीन नाम का कोई एक सी फाइल है, दैट मीन दैट इज सस्पिशियस थिंग, आप उसको रन करने जा रहे हो। अब यू कैन फाइंड आउट थ्रू प्रोसेस मॉनिटर की, हाँ सॉरी, आप फिल्टर कर सकते हो कि भाई यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्रोसेस नेम इज, अब यहाँ पे नाम लिख सकते हो उसका और अप्लाई कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। तो प्रोसेस मॉनिटर क्या करेगा, उसी नाम से उसी नाम से क्या करेगा, सारी जो भी प्रोसेस रन हुई होंगी, जो भी मॉडिफिकेशन होगा वो यहाँ पे भी दिखा देगा। ओके ओके, जस्ट गिव मी अ सेकंड गाइस। ओके, सो उस बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं कि भाई कौन से पैकेट्स और नॉट पैकेट्स, आई मीन कौन से इवेंट्स, कौन सी रजिस्ट्री की हमारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हाँ, मैंने बताया था कि प्रोसेस, एक ने क्वेश्चन पूछा था कि हम प्रोसेस आईडी के थ्रू कैसे चेक कर सकते हैं। दीज आर द थिंग्स आई एम टॉकिंग अबाउट। प्रोसेस ट्री है, अब यहाँ पे प्रोसेस आईडी के थ्रू आप देख सकते हो कि भाई फॉर एग्जांपल लेट्स से एग्जांपल svch host डॉट exe ले लेते हैं, ठीक है। अब इस ये हो गया पेरेंट, दीज आर द चाइल्ड प्रोसेस, ठीक है। ओके, सो अगर आप इसको क्लिक करते हो यू कैन सी ऑल द थिंग्स, व्हाट काइंड ऑफ द यूजर डिस्क्रिप्शन, व्हाट आर द पाथ, और कमांड के यूज कर रहा है इसको रन करने के लिए, ठीक है। आप सब कुछ देख सकते हो। पासवर्ड, just give me a second guys, again please, password। ओके, सो गाइस आई होप समझ में आ रहा हो ना, आ रहा है ना सबको समझ में? यस। ठीक है, एक ही बंदा बोल रहा है तब से त्रिवेदी से, और कोई है ही नहीं। आई मीन देयर आर टू मोर। ओके, ठीक है। तो आप इसके थ्रू आप कैप्चर कर सकते हो जो भी डेटा है, और उसको अपने एंड से एनालिसिस स्टार्ट कर सकते हो। अब जब एनालिसिस देखने की भाई क्या चल रहा है, दैट मीन यू हैव टू टेक द क्लासेस, यू हैव टू spend much time, you have to do the practical labs, like how these suspicious files are looks like, and what kind of the information they showing us, or what kind of the information they're throwing into our system, किस टाइप की इंफॉर्मेशन ये रिफ्लेक्ट कर रहा है, या किस टाइप की सर्विसेज हमारे सिस्टम से ले रहा है। दैट इज द गेम ऑफ दी वंस यू डू दी प्रैक्टिकल थिंग। ओके, तो उसी के साथ ये होगा, अदरवाइज यू जस्ट गेनिंग अपर नॉलेज, इफ यू जस्ट कि हाँ रट्टा मार लिया कि अच्छा ये देखना है। तो हर एक जो सैंपल होता है वो अलग टाइप की आइडेंटिफिकेशन और वी कैन से फंक्शनलिटी कंटेन करता है। से जितना आप एक्सपीरियंस करते जाओगे कि हाँ इस टाइप से, फॉर एग्जांपल ट्रोजन ले लेते हैं कि ट्रोजन यार इस टाइप की इंडिकेशन प्रोवाइड करता है, रैंसमवेयर इस टाइप की इंडिकेशन प्रोवाइड करता है, इमोटेड इस टाइप की प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब उन सारे बेसिस पे जब भी आपके पास कोई नया सैंपल आएगा, देन वो जो प्रीवियस में आपने एनालिसिस करा है वही काम आएगा, बिकॉज यू आर जस्ट ट्राइंग टू फाइंड आउट दी ऑल द आईओसी दैट यू फाइंड आउट रिसेंटली। जो भी आपने प्रैक्टिस करी है उन्हीं के आईओसीज वहाँ पे काम आएंगे। आईओसीज एक नई टर्म बोल दी मैंने यहाँ पे। आईओसीज क्या होते हैं? आईओसीज होता है इंडिकेटर ऑफ कॉम्प्रोमाइज, तो कॉम्प्रोमाइज। ठीक है।
अब दो टाइप के होते हैं, अगर किसी को पता है कि कौन कौन से होते हैं, कोई बताना चाहेगा? दो टाइप के इंडिकेटर्स ऑफ कॉम्प्रोमाइज होते हैं। नेटवर्क बेस एंड होस्ट बेस। ओके, सो नेटवर्क बेस मीन, नाम से क्लियर है, जो भी नेटवर्क टाइप की एक्टिविटी कर रहा है दैट फॉलो इन द नेटवर्क बेस। इन यहाँ पे हमारे इस केस में हमारा आईओसी कहाँ है, पिंग कर रहा है ये, ठीक है, दैट इज फॉल इनसाइड द नेटवर्क बेस। एंड होस्ट बेस क्या होगा, एनी काइंड ऑफ द पाथ you see user, that is the host base. Any kind of the exe file, host base. Any kind of the user agent, Mozilla 5.0, network. Any kind of the URL, SSL, network, kernel, that is the host. Okay, so these are the categories. Okay, so ये अगर IOCs हमारी मैच करती है then we are good to go. Okay, and there are another let me just, हाँ ठीक है, ठीक है, हाँ चलो ठीक है। अब यहाँ पे रजिस्ट्रीज, फॉर एग्जांपल लेट मी जस्ट डिसेबल ऑल द थिंग्स, सो इट जस्ट शोइंग द रजिस्ट्रीज, दैट इज ओपन द रजिस्ट्रीज, query values, if it's there any creating any kind of the registry, let me just see. No, it is opening some registry key, so you just can analyze what kind of the registry is going on. If you see any kind of the registry modification happening or the creating any kind of the registry, that you can identify and you can right click and you can go to the property and you can check what it's exactly is trying to do. Okay, right, so these are things help you to identify the malicious file or malicious activity. Okay, and let's come up to the network traffic. Just give me a second. Okay, so let's come to the network one. Okay, so network security CTI में किस तरह से हेल्प कर सकती है? Okay, so किस किस को वायर शार्क चलाना आता है? यस सर। सबको आता है। वायर शार्क करता क्या है? कौन एक्सप्लेन करना चाहेगा? It's a packet capturing tool. It is used to help analyze the packets. ठीक, So what पैकेट type of कैप्चर एज protocols वेल it's एज इसका passing. रूट Sir, flags. network analyzer. one by one, guys. Wireshark is a network scanning tools and network analyzing tools which analyze what packet is coming or going from your network or traffic. Okay, anyone else? It's a packet यस capturing सर, tool to help to analyze सबसे पहले तो the. वायरशार्क सर TCP/IP प्रोटोकॉल पर सपोर्ट करता है। और सर फिर वो सबसे बड़ा वाइड रेंज एरिया को कवर करता है, जिसकी हेल्प से अपन मतलब स्कैनिंग जो बेटर परफॉर्मेंस रहती है वो कवर अप कर सकते हैं। Yeah, actually, it's a packet capturing tool help to analyze the what type of data is passing and what are the protocols that we are using and the flags of the data. Okay. Anyone else? And also it performs two type of analysis. One is static, another one is dynamic analysis. Static means directly which is dynamic is which is a live, and static is which we saved previously. Okay. So yeah, I hope rest of guys हैं उनको समझ में आ गया कि वायर शार्क बेसिकली करता क्या है, ठीक है। So let me just explain कि हम वायर शार्क का यूज कर सकते हैं एनालिसिस करने के लिए सिक्योरिटी बेस्ड mostly, and you guys can use the snort also to analyze the events, ठीक है। So मैं यहाँ पे सिर्फ एक कुछ ट्रिक्स और टिप्स बता देता हूँ कि इसको हम जो इंटेलिजेंस होते हैं, जो हंटर्स होते हैं, वो कैसे यूज करते हैं, और नेटवर्क और सिक्योरिटी रिसर्चर जो होते हैं वो कैसे यूज करते हैं इसको, ठीक है। सो दे जस्ट यू नो do the analyze on the basis of the what kind of the packets are capturing, and they just go to the statistics. Okay, and there is
protocol. Okay, and you can see here there are the lot of protocols that you can see. So कोई भी protocol अगर legit दिख रहा है that means that is legit protocol. ठीक है, यहाँ पे आपको बहुत सारे protocols दिख सकते हैं. ठीक है, IPv4 का दिख सकता है, TCP DNS का दिख सकता है. ठीक है, so that is mean that is the relative and that is mean legit प्रोटोकॉल. ठीक है, और यहाँ पे आपको पता चलेगा कि पैकेट्स 100% कैप्चर करें या नहीं करें. ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ कि हाउ वी कैन डू द एनालिसिस. सो सिंपली ये जो स्टैटिस्टिक्स में जाके आप प्रोटोकॉल में जाके देख सकते हो कि हाँ कौन कौन से प्रोटोकॉल के थ्रू कितने पैकेट्स आए हैं. ठीक है, अब जब आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन करते हो फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ इथरनेट के बाद हमारा एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल है. So that means that is capturing the 100% packets captured कर रहा है. ठीक है, so that is seems legit. And if you need to try to find out like not seems legit to you or seems suspicious, so any kind of that thing जो कि relevant नहीं है, for example any kind of the protocol showing you the drop down like name by the data. ठीक है, डेटा भी हो सकता है, कुछ अदर नेम भी हो सकता है. दैट मीन कि प्रोटोकॉल तो लेजिट है, हमारा प्रोटोकॉल सेम यूज करा गया है, बट जो उसके अंदर जो डेटा है दैट इज द अनआइडेंटिकल डेटा. ठीक है, तो वहाँ आप स्टैटिस्टिक्स को और प्रोटोकॉल में जाके आप देख सकते हो इजिली कि अगर जो अनआइडेंटिकल है दैट इज नेम बाय द डेटा और एनी अदर नेम दैट इज अनआइडेंटिकल थिंग्स. ठीक है, सो यू कैन try to you know open that thing and you can filter those packets according to you कि हाँ हमें यही एनालिसिस करना है. ठीक है, अब यहाँ हम बेसिकली क्या देखते हैं, जब आप पैकेट्स खोलोगे बेसिकली तो हाँ यहाँ पे हमारे पास चीज आती है. पहला जो होता है हमारा इन्फेक्शन चेन ऑफ इवेंट्स. ठीक है, इसको बोलते हैं कि क्या चेन यूज करी गई है इन्फेक्टेड करने के लिए उसके उस पैकेट के थ्रू. ठीक है, सो मैंने पहले भी एक्सप्लेन करा था कि अगर पहले तो लिजिट दिखेगा वो पैकेट. ठीक है, वो दिखेगा ओरिजिनल, बिल्कुल ओरिजिनल रेफरेंस दिखेगा google.com, और फिर उसके बाद जो भी यूआरएल होगा, रेफरेंस पैरामीटर्स फंक्शन जो भी पाथ होगा वो लिजिट होगा. देन आफ्टर दैट ए सीरीज ऑफ द रिडायरेक्शन हैपनिंग. ठीक है, उसके बाद रिडायरेक्शन की सीरीज स्टार्ट हो जाएगी. अगर इस टाइप से आपको पैकेट्स कैप्चर होते हुए दिखाई देते हैं दैट मीन देयर इज समथिंग इज गोइंग ऑन दोस पैकेट्स. ठीक है, कुछ ना कुछ यहाँ चल रहा है हिसाब किताब. पहले तो लिजिट था, फिर सीरीज ऑफ रिडायरेक्शन चल पड़ा. So that is seems still legit because according to the rules, according to our protocols, according to our server और जो भी हैं security events उसके according तो legit है. But एक human understanding के लिए we have to suspicious, like we have to be like suspicious about that thing कि पहले तो legit कर रहा था, redirect कर रहा था. ऐसा तो बहुत कम बार होता है. चलो हो भी गया, चलो let's see आगे क्या होता है. That mean then after that we have to check the any kind of the traffic or domain that is not seems secure, that is going to be the HTTP, not S. Okay, or it is, if it's HTTPS, that mean we need to try to find out any kind of the we can say the types of script. Like अगर ये text slash javascript करके दे रहा है that mean, और 200 okay है that mean text slash javascript करके आ रहा है, तो that mean we have to check out the raw data यहाँ पे हमें शो कर देता है आराम से. ठीक है, तो रॉ डेटा में हमें चेक करना पड़ता है कि बेसिकली क्या चल रहा है यहाँ पे. ठीक है, अब उस बेसिस पे हमें वो स्क्रिप्ट को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. देन वी हैव टू कम अप दैट की मेथड्स कि भाई किस टाइप से हम इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और किस टाइप से एनकोड कर सकते हैं कि भाई क्या चल रहा है बेसिकली. ठीक है, एंड अ सीरीज ऑफ रिडायरेक्शन, मैंने पहले हाँ चलो सीरीज ऑफ रिडायरेक्शन बता देता हूँ. ओरिजिनल रेफरेंस आएगा, देन आफ्टर दैट वी हैव द सीरीज ऑफ रिडायरेक्शन गोना बी हैपन. And 302 found, if you found 302, that mean the move temporarily, that mean the move temporarily, that mean that is redirecting somewhere else that packet. ठीक है, the protocol can still be the legit but the data cannot be the legit. Okay, ठीक है, फिर उसके बाद हमारा आता है exploit domain traffic. ठीक है, अब exploit domain traffics हमारा क्या करता है, जैसे मैंने बताया था 200 ओके आ गया, जावास्क्रिप्ट आ गया, HTML करके आ गया, एप्लीकेशन स्लैश जावा आर्काइव आ गया, और एप्लीकेशन ऑक्टेड स्ट्रीम आ गया. दैट मीन दोज कंटेनिंग सम malicious activity, some malicious script inside those things. ओके, सो ये एक सीरीज है. ठीक है, अब इसको आफ्टर एनालाइज दोज थिंग्स देन देयर इज अ टर्म कम अप द ट्रैफिक हाईलाइटिंग. ठीक है, अब इन ट्रैफिक को हाईलाइट कैसे करना है वो आता है. ठीक है,
फॉर एग्जाम्पल कोई भी सिंटेक्स मिला, एक्सप्लॉइट लैंडिंग पेज मिला आपको, ठीक है, देन हाउ यू गोना आइडेंटिफाई दोस थिंग्स? ओके, जस्ट गिव मी अ सेकंड प्लीज. Okay, just give me one minute. Okay, I'll be back in just 1 minute. And सबको समझ में आ रहा है ना जो मैं बता रहा हूँ, नेटवर्क ट्रैफिक को कैसे यूज करना है गाइस? जी सर। ठीक है, कहीं भी कंफ्यूज हो रहा है तो मेरे से पूछ लेना कि सर ये समझ में नहीं आया, या फिर जो भी क्वेश्चन है, ठीक है. जस्ट गिव मी 1 minute, I'll be back in just 1 minute. Okay. ओके, सो वी हैव अ क्वेश्चन. कौन से बैक में रनिंग चल रहा है? व्हाट यू मीन बाय द रनिंग चल रहा है? आई मीन क्या चल रहा है? मालवेयर फाइल जो हम लोग इंस्टॉल कर दी, ठीक है, तो वो कैसे पता चलेगा? अगर आपने कांड कर दिया है, इंस्टॉल कर दिया है, आप कैसे पता चलेगा? सर आप क्रोम में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? Malware analysis, reverse engineering, and currently I'm enrolling for the threat intelligence, and you guys also can enroll for the threat hunting, as well as the SOC analyst, as well as the endpoint. और कौन से छोड़े, और कोई है सर? और होगा तो वो भी होगा शायद. CH वगैरह मैं हैकिंग से रिलेटेड कुछ नहीं पढ़ाता हूँ. I'm just teaching to protect how you can protect yourself. And there is a key point कि जब आपको पता चल जाता है ना कि आपको, हम अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं, तो आप इजीली पता कर सकते हो कि भाई हैक भी कैसे हो सकता है बंदा. जी सर. सर आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम अमित. ओके ओके, ठीक है. सो क्वेश्चन पूछा था, मालवेयर फाइल जो हम लोग इंस्टॉल कर दिए हैं कैसे मालूम चलेगा? ठीक है, उस केस में क्या होगा, देखो सबसे पहले क्या काम आएगा हमारा, टास्क मैनेजर. ठीक है, टास्क मैनेजर में लेट्स से टास्क मैनेजर पे आप देख सकते हो कि भाई कौन कौन सी एप्लीकेशन रन है, बैकग्राउंड प्रोसेस क्या चल रहा है, ठीक है. सर्विसेज कहाँ गई हमारी? सर्विसेज इज मेन पॉइंट कि सर्विसेज कौन कौन सी रनिंग में है, ठीक है. यहाँ से आइडेंटिफाई करना है कि, और सबसे पहली बात जो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि सबसे ज्यादा CPU मेमोरी यूज कौन कर रहा है. दैट मीन्स दैट वी कैन कोई भी मिलीशियस थिंग है वो साइलेंटली नहीं बैठेगा, वो साइलेंटली कुछ हद तक बैठेगा, ठीक है. जब उसको अपनी चीज मिलेगी देन इट्स स्टार्ट वायलेंट इटसेल्फ कि भाई चलो भाई काम स्टार्ट कर दो, ठीक है. तो वो कांड करना स्टार्ट करेगा, फाइल एक्सेस करना स्टार्ट करेगा, ड्रॉप करना स्टार्ट करेगा. इन केस में वो क्या करेगा, फिर मेमोरी और CPU हाईली यूज करेगा, सीधी सी बात है, ठीक है. और अगर वहां हमें कुछ रिफ्लेक्शन नहीं मिलती है देन वी विल लुक फॉर दी सर्विसेज. We can't identify any kind of the service, ठीक है, then simply we open the TCP. If it's there any network related like we can say the malware is trying to execute itself or approaching something or its origin we can say, ठीक है, तो हम TCP यूज के थ्रू देख सकते हैं. अगर वहां से हमें कुछ पता नहीं चल रहा है देन वी कैन रन द प्रोसेस मॉनिटर और द प्रोसेस हैकर, ठीक है. प्रोसेस हैकर क्या करेगा, बेसिकली सारे जो भी रनिंग में फाइल है वो हमें लाके हमें दे देगा
और वहां हम फिर एनालाइज कर सकते हैं वन बाय वन कि क्या चल रहा है, ठीक है। अगर तब भी हमें वहां पे पता नहीं चल पा रहा है, देन वी विल लुक एट द इवेंट्स कि व्हाट काइंड ऑफ द इवेंट्स इज एक्चुअली क्रिएट बाय आवर सिस्टम। और कोई भी जैसे सॉफ्टवेयर के थ्रू इवेंट्स जनरेट हुए हैं उसको सर्च कर सकते हैं, सिस्टम बेस्ड जो है उसको थ्रू चेक कर सकते हैं। सो दीज आर द वे, ओके। एंड इनको आइडेंटिफाई करना कैसे आना चाहिए, that is depend on you, like if you know how the malware looks like and how it behaves, what kind of the approach is trying to do, तभी आप कर सकते हैं, अदरवाइज नो। इवन अगर मैं बोलूँ कि ठीक है इसको सस्पिशियस आइडेंटिफाई करके दिखाओ, तो यू कांट जस्ट से कि हाँ सर ये, तो उसको एनालिसिस करना बहुत आना चाहिए कि हाँ, तभी आप बोल सकते हैं कि हाँ मैंने ढूंढ लिया ये रहा, ठीक है। क्लियर है? सर जिसका प्रोसेस हाई रहेगा वही मतलब नहीं ऐसा वायरस कुछ रहेगा। नहीं ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि जिसका प्रोसेस हाई रहेगा कि वही वायरस रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। सो दैट इज द, वी आर जस्ट टेकिंग द पॉसिबिलिटीज कि क्या क्या गलत हो सकता है, ठीक है। इफ यू नो द एनालिसिस, इफ यू नो द फंक्शनलिटी, इफ यू नो हाउ इट्स बिहेव, द मालवेयर बिहेव कैसे करता है, देन यू आर गुड टू गो, ठीक है। अब डायरेक्टली आप अब बोल रहे हो कि इसकी प्रोसेस हाई है, देन वी कैन से डायरेक्टली से हाँ ये तो वायरस है, नहीं ऐसा नहीं होता। यू हैव यस टू, सर, वो तो कुछ भी हो सकता है। हाँ ठीक है। तो एविडेंस इज रियली इंपॉर्टेंट, क्या किस बेसिस पे बोल रहे हो वो फाइंड आउट करना आना चाहिए। तो वो कब आएगा, जब आपको एनालिसिस करना आता है अच्छे से मालवेयर को, आप समझते हो कि हाँ बिहेव कैसे करता है, तो किस किस टाइप की फंक्शनलिटी उठाता है, ठीक है, और अपने आप को कहाँ हाइड करता है, कौन से सेक्शन में हाइड करता है। इसके लिए इसके ये हम्म। वायरस एनालिसिस के लिए सर मैनुअल जो सीखता है उसके लिए सर लैंग्वेज भी सीखना पड़ता है क्या? नहीं, इस दैट इज द गुड पार्ट अबाउट द मालवेयर एनालिसिस, रिवर्स इंजीनियरिंग एंड द हंटिंग एंड द इंटेलिजेंस एंड द एंड पॉइंट सिक्योरिटी एंड द सॉक एनालिसिस, यू डोंट नीड टू केयर अबाउट द कोडिंग। कोडिंग नहीं होती है, there are, you know, we can say just 1 to 2% coding are there। सर जब तो आप जैसे ऑटोमेटिक में ना टूल्स यूज करते हैं, मैनुअल में सर मैनुअल में देखो, विदाउट टूल्स यू जस्ट कांट गो, यू नो, विद द फ्लो। अगर आप पे टूल्स नहीं है, ठीक है, सो जो सिस्टम प्रोवाइड करता है जैसे टास्क मैनेजर, ठीक है, वहां से फाइंड आउट कर सकते हैं, इवेंट्स लॉग्स जो जनरेट हो रहे हैं वहां से फाइंड आउट कर सकते हो। सो दीज आर द वे। सो तभी ये टूल्स एक्शन में आए कि इन ये जो है हमें कैप्चर करके दे देते हैं कि भाई क्या प्रोसेस चल रही है। And there are a lot of tools. Let me just show you. There are a lot of tools to analyze those things. So these are the tools. Okay. So in utility, if you look, these are the tools for the analysis. API logger, Redshot, CFF. There are a lot of ways that you can, you know, see. So जो भी कोई कंपनी है, चाहे माइक्रोसॉफ्ट हो, गूगल हो, माइंट्री हो, कैस्परस्काई हो, मैकेफे हो, those company are gonna, you know, allow you to install, or they're gonna install for you, so you can do सर the analysis। बट ये लोग मतलब कंपनी वाले भी तो सर देते तो वहां लिख देते कि मैनुअल एनालाइज करना है ना, जैसे उनका अप्लाई करेंगे सर हम लोग जॉब के लिए तो वहां लिख देते कि ये टूल्स नहीं यूज करने हैं, नहीं मैनुअली इसको करना है सर एनालाइज। स्पेशली, हाँ, लेट मी जस्ट एक्सप्लेन कि अगर कहीं भी आप जा रहे हो जॉब करने के लिए, तो मैनुअली का मतलब क्या है, स्टैटिक और डायनेमिक जो हम कर रहे हैं वो मैनुअली कर रहे हैं, ठीक है। इट्स नॉट ऑटोमेशन एनालिसिस, दैट इज कॉल्ड एन मैनुअल। Okay, we just going through the manually, we have to analyze by ourselves, we have to identify कि क्या suspicious है। It's not automation। automation में क्या आता है, हमारा सैंडबॉक्स आ जाता है, सैंडबॉक्सिंग, वो खुद ब खुद हमें रिजल्ट देता है कि भाई ये रजिस्ट्री की सस्पिशियस है। सो वी नॉट जस्ट रिलाई ऑन दी सैंडबॉक्सिंग कि भाई क्या हो सकता है, क्या गलत है सैंडबॉक्सिंग के थ्रू, ठीक है। सो दैट्स व्हाई आई प्रेफर द मैनुअल एनालिसिस व्हिच इज कॉल्ड द स्टैटिक एंड डायनामिक थ्रू। स्टिल यू गोना नीड दोस टूल्स, ओके। अगर कोई भी जॉब डिस्क्रिप्शन पूछता है कि आपको पी फाइल पे एनालिसिस करना आना चाहिए, ठीक है, so I'm pretty sure, 200% sure, you can't analyze the p file without its structure, looking at its structure, and how you gonna look its structure, p view के थ्रू कर सकते हो स्ट्रक्चर, cff एक्सप्लोर के थ्रू इसका स्ट्रक्चर चेक कर सकते हो। तो these are the mandatory tools, and those tools provide you manually analysis। ये ऑटोमेशन में नहीं देती है, मैनुअली ही करना पड़ेगा, तुम्हें आइडेंटिफाई खुद से करना पड़ेगा कि कौन सा गलत ट्रैफिक दिख रहा है, या फिर कौन सी किस टाइप की सर्विसेज स्टार्ट हो रही है, गलत है या नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे सर जैसे आप बता रहे टूल्स का यूज कर सकते हैं कहीं कहीं पर, तो सर कहीं कहीं पर ये तो फिर जैसे और सब जैसे वीएपीटी ये सब में भी सर रिपोर्ट मतलब उन लोग गलत
टूल्स देता है कि ये वल्नरेबिलिटी, बट वो रहता नहीं है। तो सर इसमें भी तो रिपोर्ट गलत जनरेट करके देता होगा हमें। समझा नहीं मैं आपको क्वेश्चन, एक बार रिपीट करो। सर जैसे और सभी में सर वीएसपीटी या पेन टेस्टिंग में सर वो जो हम लोग टूल्स यूज करते हैं स्कैनिंग करने का, वल्नरेबिलिटी फाइंड करके हमें देता है, तो वो गलत दे देता है ना कई बार, मतलब 90% गलत देता है। हाँ सर 90% तो वो गलत ही देते रहता है, मतलब गलत नहीं, मतलब उसको लगता है कैसा है बट वैसा होता नहीं है सर रियल में। ठीक है, उसी तरह सर ये टूल्स भी तो करते होंगे ना। नहीं, आई एम रियली सॉरी टू से, नहीं ये नहीं करता। लुक, what you're trying to do, this tool is just simply capturing the data from your system, that's it. It's not doing anything else. जो भी सर्विस रन हो रही है, प्रोसेस मॉनिटर तो जानते हैं सर, ये तो जो रियल होगा वही देगा ना। और ठीक सर है, जो आप tools बता रहे हैं, मैंने कोई एक्स्ट्रा टूल बताया नहीं, ये सब क्या कर रहे हैं। पी स्टूडियो क्या है, सिंपल एक टूल है, ठीक है, जो स्टैटिक में हेल्प करता है, जो भी उससे रिलेटेड फाइल्स है उसकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, दैट्स इट। ठीक है, तो स्टिल जब आप पी स्टूडियो में ड्रैग एंड ड्रॉप करो, स्टिल यू हैव टू फाइंड आउट बाय योर एंड कि भाई इसको आप मालवेयर किस टाइप से बोलोगे, क्यों बोलोगे, रीजन क्या है। ठीक है, सिंपल नेसेस क्या है, वो तो एक आपको सीधे सीधे रिजल्ट ला के दे दे रहा है ऑटोमेशन में कि भाई जी ये सर। वल्नरेबिलिटी फाइंड करिए। तो यहाँ पे इस टाइप से नहीं हो रहा। जब भी आप कोई भी टूल यूज कर रहे हो, दैट मीन यू हैव टू आइडेंटिफाई बाय योरसेल्फ। वो खुद ब खुद नहीं बताने वाला है कि भाई मैं मालवेयर हूँ, ये रही। टूल नहीं बताएगा कि ये रहा, ये रहा, देखो, ऐसा नहीं बताने वाला है। यू हैव टू एनालाइज। सर उसका परफॉर्मेंस बस बताता है कि ऐसे ऐसे काम कर रहा है। और कुछ नहीं बताता। ठीक है, बस वही बताता है कि परफॉर्मेंस क्या चल रही है, इस टाइप की एक सर्विस स्टार्ट हुई है, नई सर्विस कौन सी स्टार्ट हुई है, प्रोसेस आईडी क्या है, पेरेंट पीआईडी क्या है उसकी। ठीक है, और ये सारी चीजें बताता है। जब आपको एनालाइज करने जाओगे इन डेप्थ में, तब आपको एक कंक्लूजन पे आना है कि यार ठीक है, सस्पिशियस तो दिख रहा है बट इतना हाईली नहीं दिख रहा है, बट स्टिल यू द वन हु डूइंग द एनालिसिस, नॉट द टूल। ठीक है, तो ये ऑटोमेशन टूल नहीं है। सो बी क्लियर, दीज आर द नॉट द ऑटोमेशन टूल, ये जस्ट हेल्प कर रहे हैं आपके एनालिसिस में, दैट्स इट। दे आर जस्ट कैप्चरिंग द डेटा यस फॉर सर। योरसेल्फ। ठीक है, कि भाई ये डेटा है, आप देख लो अपने हिसाब से क्या करना है इसका, सिर्फ ये इतना कर रहे हैं। ठीक है, अमित सर, ये आपका नंबर मिल सकता है मेरे को? एक्चुअली देयर आर लॉट ऑफ स्टफ आई नीड टू डिस्कस वन टू वन, मतलब you want to discuss one to one. Actually this session it has been recording, from the organization, so I can't share my number on this session, but I can share my email id, that is going to be the professional email id. Okay, so reach me out there. Okay, just let प्लीज me drop प्लीज, my बिकॉज email id. हाँ, क्योंकि देखिए देयर आर लॉट ऑफ स्टफ, मींस आई एम पार्ट ऑफ सॉक समवेयर, ठीक है। Mm-hmm. तो अभी जैसे मेलवेयर एनालिसिस, थ्रेट इंटेलिजेंस, थ्रेट हंटिंग, ये मतलब Mm-hmm. सेपरेट सेपरेट फील्ड है, बट ऑल टुगेदर जब जॉब के लिए जाते हो तो यू मस्ट हैव आइडिया ऑन ऑल द स्टफ, ठीक है। तो Exactly. मेरे को सब्जेक्ट से ही रिलेटेड, आई एम नॉट गोइंग समथिंग पर्सनल, सब्जेक्ट से ही रिलेटेड फॉर माय Mm-hmm. नॉलेज पर्पस ही मेरे को आपसे डिस्कशन करना है, और उसका मतलब, बट वो है कि थोड़ा सा मतलब बड़ा सा डिस्कशन है, तो इसीलिए दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग फॉर योर Mm-hmm. टू वन नंबर। Okay, no issue, no issue. No issue. We can have the conversation. I just dropped my email. You can, share your email ID or the number. I will contact you. अच्छा, Okay. you are on So LinkedIn as well, huh? no, I don't use LinkedIn, Insta, Facebook. I don't use. I'm not that fan of those kind of the social networking. अच्छा ठीक है, आप अपनी मेल आईडी मुझे दे दीजिएगा, ठीक है, देन विल लुक। ठीक है, मैंने ड्रॉप कर दिया। ठीक है, अभी आया नहीं। ठीक है, लेट्स गेट मीटिंग बैक टू दी। हाँ, यहीं पे करिए, मेरे मैसेज में देखिए, चैट पे तो नहीं आया मैंने सर। डायरेक्ट मैसेज करा। वेट, आई जस्ट मैसेज डायरेक्टली टू दी राजकुमार। ओके, नाउ गुड। ओके, यू ठीक, गेट इट। यस यस ठीक सर, है, मिल। थैंक यू सर, ठीक है, थैंक चलो। ओके, सो लेट्स फिनिश दी डायनेमिक समझ में आया ना कि क्या चल रहा है डायनेमिक में? स्टैटिक भी समझ में आया होगा। यू। जी सर। ठीक है, चलो बढ़िया। सो डायनेमिक, टू बी ऑनेस्ट, जब आप एनालिसिस कर रहे हो ना, इट्स रियली इजी, बहुत इजी रहता है। और मैं इसको इतनी इंपॉर्टेंस क्यों देता हूँ, बिकॉज इसी के बेसिस पे तो आप यार फाइंड आउट करोगे कि भाई क्या सस्पिशियस चल रहा है। जब तक आपको ये एनालिसिस नहीं आएगा, तो यू कांट ट्राई टू allocate the suspicious traffic, even the signatures, you can't.
Without analysis, you can't just go on the conclusion, and you can't just judge that event or judge that package or traffic directly. Okay, so that's why it's really important that you have to know like how the malware analysis getting done, and how we're going to use the malware analysis even for the SOC analyst, even for the endpoint security, even for the threat intelligence or hunting. How? Okay. फिर इसके बाद एक और खेल आता है, वो आता है रिवर्स इंजीनियरिंग का. जब सब कुछ फेल हो गया, देन हाउ यू गोना डू. समटाइम क्या होता है, जो मालवेयर है वो पैक्ड होता है, सम काइंड ऑफ द ऑब्फुकेटेड, सम टाइम ऑफ द इनक्रिप्टेड, राइट, एंड सम काइंड ऑफ द एंटी रिवर्स थिंग. ठीक है, बहुत स्मार्ट स्मार्ट मालवेयर है आज के टाइम में. तो सो इस केस में हम क्या करते हैं, इस केस में वी विल जंप ऑन द रिवर्स इंजीनियरिंग, बट स्टाइल वही रहता है हमारा एनालिसिस का. ठीक है, कि स्टैटिक करेंगे, स्टैटिक के थ्रू जो भी हमें मिल रहा है, इफ इट्स इनक्रिप्टेड ऑब्फुकेटेड टोटली, इट्स यूजलेस. But still you can find out its hashes. Hashes can be the clean, but somehow we're gonna use that hashes to write a rule. Okay. And architecture type, entry point, its image address, entry point, and the P file. What are the P file formats it's getting? How many the sections are there? And what I mean the sections means. Let me just wait. Where is the section option header? These are the section. Okay, so how many sections are going on? R data dot source. Okay, there are many. These are the section. I'm really sorry. These are the section. Yeah. So how many sections are there, and what are their functionality? As you can see, that is containing some executable data. Okay, and this is initialized data. So these are the things help us to identify like what kind of the raw data is exactly showing us. So on those basis we can note down, and you can see the entry point. ठीक है, सो ये जो डेटा होता है ये रेयरली ब्लफ करता है. रेयरली मीन्स रेयरली, इफ यू ऑब्फुकेटेड एनक्रिप्टेड इवन. सो जो नंबर्स है, एलोकेशन नंबर है जो हमारे हार्डवेयर के अंदर प्रोसेस होने वाला है, ठीक है, उसके एड्रेसेस है, उसके सेक्शंस के एड्रेसेस है, व्हाट काइंड ऑफ द फंक्शनलिटी इट कंटेन, उसके एड्रेसेस. सो दीज आर नॉट गोना लाई समटाइम्स, बट समटाइम these can lie because there are a lot of process can be happen in the session. On the session mean that प्रोसेस, उस प्रोसेस के अंदर बहुत सारी प्रोसेस हो सकती है, सब प्रोसेस हम बोल सकते हैं. ठीक है, तो उस बेसिस पे वी नीड टू डू दी रिवर्स. ये सारा डेटा फाइंड आउट करने के बाद we again gonna go jump on the dynamic, and then after that if it's reflecting something, then good. If it's not reflecting, then why, what are the reason, what kind of the environment looks like. Okay, अगर वहां से भी हमें कुछ नहीं मिला, then finally we will jump on the reverse engineering. अब reverse engineering it's a kind of the good term, and it's really good term for the analysis. उस बेसिस पे हम क्या करते हैं, जो भी मेमोरी डंप की कोशिश करते हैं, जैसे मैंने पहले बताया था कि यू हैव टू लुक एट द एग्जीक्यूटेबल, रीडेबल और राइटेबल फ्लैग, and you have to look at the some APIs that I point out, the virtual alloc, and create process internal W, and the third is the virtual protect and the LP address. So there are a lot of APIs that can contain the malicious activity. Take it. Just give me a second, guys. ओके, सो रिवर्स इंजीनियरिंग, हाँ मैं एपीआई के बारे में बता था. तो बहुत सारी एपीआई है जो सस्पिशियस डेटा कंटेन करके रखती हैं, और कोड, नॉट द डेटा, कोड और बाइनरीज, malicious बाइनरीज कंटेन करके रख सकते हैं. तो उस केस में फिर हम रिवर्स पे जंप करते हैं, एंड हाउ वी गोना अनपैक दैट थिंग, हाउ वी गोना विन ओवर दी दैट मालवेयर, कि उस मालवेयर को हम धोखा कैसे दें और उसको डंप कैसे कराएं और फिर एनालिसिस स्टार्ट करें. ठीक है, ठीक है. देन दीज ऑल द थिंग्स, if you know, you're good to go for the, as one person said, I forgot his name, I guess Joshi, I think you guys one. So he's the one doing the SOC, so I'm pretty sure he also encountered some event and the rules, right, that is getting flagged up. ठीक है, तो अगर समटाइम क्या होता है, जो हमारे पास इवेंट्स आते हैं दैट कंटेन लॉट ऑफ डेटा, इवन द in form of the exe non-pnp data. So you have to know how you can analyze that p or non-p file is coming, that file is legit or not legit, then you have to do the analysis.
simply if you just blocking those things, it's not that necessary. You're just blocking without the any evidence. Okay, so these are all the things, these all the styles and process help you to analysis what kind of the suspicious things is exactly going on. And this is why really important for malware analysis for all sectors. All sector mean that even for the I'm just saying that for the blue team. Okay, for only for the blue teams, but it can be the helpful for the red team, because if you know how it's gonna work and how we need to defend ourselves, then you can also violate. I mean, you can create the violence. Okay, and सर ये I'm ब्लू टीम के अंदर में आता है या रेड टीम के अंदर में? blue. That is the blue teaming. Red teaming is the offensive one, and the blue team is defensive one. So we are just trying to defend ourselves. But you can use these things to offend something. You can create your own malware if you know the functionality, if you know the how the Chrome is exactly working, if you know that software is working this thing, and it is taking this kind of the imports, and this is the entry point of that thing, and if you know the reverse engineering, and if you know its functionality, what kind of the DLS, you can take advantage of that thing. You can, it's a part of the 0 days. You can try to analyze, and you can try to find out its that weakness or vulnerability that never find out. Okay, that, but कब ये possible है जब आपको अच्छे से आता है कि हाँ ये functionality यूज कर रहा है, ये DLS यूज कर रहा है, ठीक है, ये offset ये store कर रहा है, ये binaries यहाँ पे store कर रहा है, it is using that kind of the paging system, और इतनी हमारी RAM की allocation यूज कर रहा है, and these are the we can say the memory allocation addresses, ठीक है, जब ये खेल पता है आपको, then you can do the offensive, and when I'm saying the offensive, that is the critical offensive. Okay, so let's end this session. I think सबको समझ में आया, but ये सब कैसे आएगा जब आपको अच्छे से एनालिसिस करना आता है. And if you're just seeking for a job, if you're just seeking for a job in any kind of the security company, then the certification is good. Certification karo, and keep learn those things. Keep, okay, someone send Rajkumar. Okay, Rajkumar said something. Okay, I will come to you. Okay. Okay, just give me 1 minute. Just let me read the message. अच्छा अमित जी, ये इस सेशन की रिकॉर्डिंग कैसे मिलेगी है? सेशन की रिकॉर्डिंग जस्ट ये लिंक कहाँ से मिला था? आई मीन सेशन को ज्वाइन करने का? ये तो मेरे को लिंक्डइन से ही मिला था. लिंक्डइन से मिला था. ओके यार, ये तो मेरे को भी नहीं पता कौन देगा, बट आई विल ट्राई माय बेस्ट टू प्रोवाइड यू गाइस द रिकॉर्डिंग्स. ओके, यू आर अमित यादव राइट? नहीं यार, अमित कुमार. अमित कुमार. Am I audible? I guess it's your network. My name is Amit Kumar. Okay, just so give me a second. Okay. Okay, look, Rajkumar. Look, okay. Okay. So how I'm gonna contact you? I mean, how you can contact me? Just mail me. Okay, I'll send you the mail. So mail me. Okay, Rajkumar. Okay. So far so good. We did the good knowledge sharing, Katie. Okay. So I hope this session is understandable for you guys. A lot of people is just left out. समझ में आया ना सबको? वही अमित जी, एक्चुअली आई जॉइंड अ बिट लेट, तो वही मतलब इनिशियली पोर्शन में स्किप कर गया. दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग फॉर द रिकॉर्डिंग. Okay, I will try my best. Okay, or just mail me. Okay, then I will provide you. ठीक है, ठीक है. ठीक है, चलो इस सेशन को एंड करते हैं. एंड आई होप यू गाइस okay, so I hope you guys learn a lot of things from this session कि भाई क्यों important है इतना malware analysis और कहाँ कहाँ यूज हो सकता है और
किस टाइप से, and if you really curious about to just doing a job, a simple job. I mean, I'm really sorry if I'm saying just simple job, as job just making you a slave. Okay, so whenever you're doing the job, whenever you reaching out any kind of the job, then make sure that whatever job you're doing, that is the excite you means that is you're happy with that thing. Happy means you're satisfied. I mean, not that satisfied, I mean to say कि मजा आ रहा है उस काम करने में, so you can do even 10 year, even the 15 year, you can do without any issue. Okay, so अगर 10 to 15 year जॉब करना है, then definitely you have to know all the area की major area क्या क्या होता है security field में. ठीक है, as far like related to hacking किस टाइप से होती है, मतलब नॉलेज होनी चाहिए सब चीज की, बट एक प्रोफेशन एरिया अपना बना के रख लेना कि भाई मेरे को इसमें परफेक्ट बनना है. एंड इफ यू कांट फाइंड एनीथिंग कि भाई once you go for the job, there is a highly possibility that you can encounter the unrelatable things that you whatever you're doing. So that's why I'm saying कि नॉलेज सबकी गेन करो. 3 Idiot मूवी देखी होगी भाई, जहां से ज्ञान मिले बटोर लो, बट इन द एंड में फोकस रहो कि जो आपको करना है ना दिल से, उस पे रहो फोकस, नॉलेज सबकी रखो. ठीक है, सो या दैट्स इट फ्रॉम माय एंड. अब जैसे अमित जी, मैं शौक में हूँ, ठीक है, अभी मेरे को अभी ठीक है, बट वो है कि वो मॉनिटरिंग वाला पोर्शन है, ठीक है, और अभी मेरे को आगे देखना है, क्योंकि अभी क्या है कि थ्रेट इंटेलिजेंस, थ्रेट हंटिंग, मालवेयर एनालिसिस सब अपने में अलग अलग एक फील्ड है. अभी ये जो मालवेयर एनालिसिस का कोर्स है क्रू में, ये क्या क्या कवर करते हैं इसके अंदर आप? I cover everything like कि स्टैटिक को इन डेप्थ में कैसे करते हैं. ठीक है, मतलब स्टैटिक, डायनेमिक, एंड देन वी गो टू द रिवर्स इंजीनियरिंग एज वेल एज. अच्छा, ठीक है, कि कोड इंजेक्शन किस टाइप का होता है, प्रोसेस इंजेक्शन किस टाइप से होता है, और यहाँ पे आता है हमारा कॉम इंजेक्शंस, डीएलएल इंजेक्शंस, प्रोसेस. देयर आर लॉट ऑफ टेक्निक्स दैट कैन इन्फेक्ट आवर सिस्टम. देयर आर लॉट ऑफ, एंड हर एक जो होता है ना इंजेक्शन प्रोसेस जो होती है, कोई भी एक्टिविटी होती है, हर एक प्रोसेस एक इवेंट जनरेट करता है, हर एक प्रोसेस एक सर्विस जनरेट करता है. विदाउट सर्विसेज दैट इज यूजलेस. जब तक इंटरेक्ट नहीं करेगा, जब तक रिकॉर्ड में नहीं आएगा, तब तक इट कांट रन इटसेल्फ. हाँ, ये ट्राइंग टू हाइड इटसेल्फ डेफिनेटली, पर उसको हाइड जहाँ कर रहा है, दैट इट्स आवर पार्ट की आइडेंटिफाई कैसे करना है कि कहाँ हाइड कर सकता है उसको. सो देयर आर टर्म कम अप द फाइल फॉर्मेटिंग. यहाँ पे हमारे सेक्शंस होते हैं बहुत सारे सिस्टम में, कि जैसे मैंने भी शो करा था .txt, .source, .pdata, .bss. देयर आर लॉट ऑफ सेक्शन, एंड सेक्शन कितने हो सकते हैं हमारे सिस्टम में? 65,500 समथिंग. सो इतने सारे सेक्शन है, इन सारों सेक्शनों में देखना होता है, आइडेंटिफाई करना होता है कि भाई किस में आपको हाईली लग रहा है. अब देयर आर मेजर थिंग्स. वी हैव द .r source that can store some malicious binaries in form of the किसी भी फोटो के फॉर्म में, किसी भी नॉन पी के फॉर्म में स्टोर कर सकता है. सो देयर आर लॉट ऑफ सेक्शन दैट यू कैन इंटरेस्टेड टू हेलो फाइंड सर. आउट. हाँ जी सर मेरे को लास्ट दो क्वेश्चन है सर, जो मतलब वेबसाइट्स पे भी मिल नहीं पा रहे. जैसे पहला तो कि जैसे किसी गवर्नमेंट सेक्टर में जाना हो तो सर उसका मतलब फॉर्म वगैरह वो मिल नहीं पाता, तो उसका क्या करें? मैं समझा नहीं. गवर्नमेंट सर जैसे कि अपना 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 इंडिया में आईसीए जॉब फॉर्म निकालते हैं गवर्नमेंट, इंडियन साइबर आर्मी का, तो सर उसका ऑफिशियली तो वेबसाइट्स पे सब फॉर्म फिल करने के लिए किस तरीके से पता करें कि आईसीए की अभी वो वैकेंसीज निकली हैं? I'm really sorry, ये इसके बारे में कसम से मेरे को नहीं पता कि कैसे देखते हैं. Really sorry. I mean, you can, there is a, I think a website, sarkariresult.com. I think, I don't have any idea. और सर सेकेंड डेज की जैसे अपना सर अपने हैकिंग से रिलेटेड ओएससीपी एग्जाम्स कंडक्ट होते हैं, तो सर उसके लिए क्या क्राइटेरिया चाहिए रहता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया? I mean, anyone can do the OSCP. If you have knowledge, you can do. There is no criteria. You just you just need a money. That's it. If you have money, you can go for that thing.
जैसे कोई लास्ट नाइट सर 70K to 75K of exam form sir, हाँ और I am currently running in sir second year fourth semester. look, I'm again saying, देखो OSCP, you know, they don't look about your education background क्या है. If you have knowledge, if you able to crack their exam, you're certified. If you have money, if you have knowledge, go for it. They don't care about कि भाई 12th में fail हो रखा है या कुछ नहीं कर रखा है, अनपढ़ है. If you have knowledge, if you have that confidence that I can crack that exam, just throw your money and crack that certification. You're good to go. You can, you know, go for any kind of, not any kind of the job. I mean, you can go inside the any kind of the organization related to security or blue team or the red team. सर अपना मतलब जो स्टडी मटेरियल रहेगा वो प्रोवाइड किस तरीके से होगा ओएससीपी के लिए? OSCP के लिए देखो मैं तो करवाता नहीं हूँ, बट मेरे को आइडिया है कि दे टेक द क्लास, दे गिव यू द बुक्स, bunch of books, labs, these are the things. The most अपने important, the most important thing is gonna be the labs. तो इंस्टीट्यूट्स पर अवेलेबल है क्या? That I don't know. I think they have. I think they have. Yes, there is a one person, Deepak नाम है उनका शायद, वो पढ़ाते हैं OSCP. और सर एस यू नो सर सागर सर को आप जानते हो? सागर सर, no, I don't. I no, मेरे को नहीं तो पता यार. 1 year diploma course can eligible for the OSCP exam. Look, देखो, you know, you sounds like very curious, like देखो, कोई भी कोर्स आपको एक, you know, नॉलेज ट्रांसफर करता है, एलिजिबल बनाता है कि भाई आप उस काबिल हो कि एग्जाम एटलीस्ट क्रैक कर दो. ठीक है, अब डजेंट मैटर कि आप एक फोकस्ड OSCP के लिए पढ़ना चाहते हो, सो यू कैन गो फॉर दैट आल्सो. अगर आपकी सोच ये है कि अगर मैं ये सारे कोर्स कर लूंगा, आई एम आल्सो कैन क्रैक दैट कोर्स, right? You can go for the 1 year diploma. If you think like, I don't need those things, I don't need even the courses, I will do the self study and I can crack those things. Go for it. किसी ने नहीं रोका यार, कहीं से भी आप पढ़ के कुछ भी कर सकते हो. ठीक है, ऐसा नहीं है कि 1 साल का डिप्लोमा करके OSCP क्लियर हो जाएगा या OSCP का कोर्स लेके OSCP क्लियर हो जाएगा. नहीं, ऐसे बहुत से स्टूडेंट होते हैं जो कोर्स करने के बाद भी फेल करते हैं. ठीक है, सो द मेन थिंग इज कि भाई अपने एंड से ही, मतलब आप एक डिप्लोमा और एक OSCP का कोर्स एक आपको एक अपर हैंड जरूर दे देगा कि भाई हाँ किस टाइप से आपको पढ़ना है और क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं. दैट इज गोना प्रोवाइड यू. ठीक है, बस एक अपर हैंड मिल जाता है, बट रेस्ट ऑफ वर्क कि आप ही को करना होता है सारा काम, कि भाई कितनी नॉलेज यू नो कंटेन करके रखनी है, राइट, या फिर कितना शार्प रहना है, कितना अपडेट रहना है. दैट इज अप टू यू. अब सर लोग तो पढ़ा देंगे कि भाई ये पढ़ना है, देख लो मैं पढ़ा रहा हूँ अच्छे से. उस टाइम अच्छे से समझ में आएगा देन गुड. अगर रट्टा मार रहे हैं तो वो तो खत्म हो गए. तो समझ के पढ़ना होता है. एक अपर हैंड प्रोवाइड कर देती है क्लासेस. ठीक है, एक जो गैप होता है ना, वो फिल हो जाता है बस क्लासों से. अगर आप सेल्फ स्टडी करते हो ना, सेल्फ स्टडी, I will say that is the best way, best way to can crack anything, because you the one who doing the, you know, research from your end. जब आप खुद से करते हो ना, जब आप खुद से प्रॉब्लम फेस करते हो कि यार ये नहीं मिल रहा, कहाँ से मिलेगा, ये नहीं हो रहा, जब आप इन दी एंड में अगर 1 या 2 या 3 दिन बाद आप वो रिजल्ट फाइंड आउट कर लेते हो ना, देन यू गोना रिमेम्बर दैट, यू नो, सिचुएशन फॉर एवर कि भाई मैंने ऐसे किया था. समझ रहे हो ना? So that is the benefit for the self study. Also benefit, we have the benefit for the when you do the courses. So that is up to you कि भाई तुम कहाँ stand करते हो, what you choose exactly. So I will say, if you don't, you know, relatable for the non-technical background, then I will provide you like that you should join the course and you will try to learn those things, because वहाँ पे आपको एक upper hand मिल जाएगा, साथ के साथ आप study भी करोगे. That's it. तो ये अमित जी, जैसे ये थ्रेट हंटिंग, मालवेयर एनालिसिस, ये क्या आपके इधर अलग अलग कोर्सेज है और ये कोई बंच है किसी कोर्स का? ये आपकी आवाज एक तो कट रही है. ठीक है, दोबारा से क्वेश्चन मैं पूछो. अभी आ रही है आपको आवाज? हाँ ठीक है. मैं कह रहा हूँ जैसे थ्रेट हंटिंग, मैलवेयर एनालिसिस और थ्रेट इंटेलिजेंस, ये सब एक ही कोर्स है, एक कोर्स का बंच है, या अलग अलग नहीं, कोर्स हैं क्या? ये अलग अलग कोर्स है.
CTI is a big players, you know, CTI is just a intelligence person. They don't even care about what kind of the analysis they are doing. But CTI person need to know like how they did. They, you know, they can raise the question against the malversation कि ये क्या करा है यार तुमने, मतलब हमें बेवकूफ समझ रही, तो मेरे को पता है क्या एनालिसिस करके दिया है, you know. If you don't know the analysis, if you're not that familiar with the IOCs or all the kind of the suspicious thing कि भाई एविडेंस कैसे प्रोवाइड करना है, तो तुम मालवेयर कुछ भी लाके दे देगा, आप बोलोगे अरे मैं तो ठीक है पास हो गया, ठीक है मैं इसके रिगार्डिंग रूल राइट कर रहा हूँ. सो इंटेलिजेंस जो होता है उनको ऑलरेडी सब कुछ पता होता है, ठीक है. फिर सबके बिहाफ पे वो जज करके फिर रूल राइट करते हैं कि भाई हाँ ठीक है जो बंदे ने दिया है उसको रिकन्फर्म करके देन दे राइटिंग. दे जस्ट डोंट जस्ट कि हाँ पास कर दिया रूल राइट कर दिया, ऐसे नहीं होता. सो दे नो ऑल द थिंग्स कि क्या प्रोसेस थी इसके पीछे. नहीं तो यहाँ पे अगर ये चीज सीखनी हुई तो किस उससे आना है कि भाई क्या पढ़ने आया हूँ मैं, मतलब क्या CTI का कोर्स है, ये क्या चीज है? देखो अगर आप सिर्फ CTI का कोर्स ही करना चाहते हो, आप सोचिए कि हाँ मेरे को CTI में करियर बनाना है, आई मीन जॉब चाहिए. वन पार्ट इज कि you can't find out the job in CTI as a fresher. That's the clear thing. ठीक है, ठीक है. अगर आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं and you want to upgrade yourself, then it's good. You just can go just for the CTI. अब जब CTI जब करोगे तो वहाँ पे मालवेयर एनालिसिस का पार्ट आएगा, बट डेप्थ में नहीं आएगा. ठीक है, एक अपर हैंड में आएगा. ठीक है. एंड इफ यू वांट टू लर्न कि यार ये पता तो कर लिया है अपर हैंड में, ठीक है, अपग्रेड कर लिया खुद को, बट इन डेप्थ में नॉलेज नहीं है. अब इन डेप्थ में जब नॉलेज होगी तो फिर पता होना चाहिए कि एनालिसिस कैसे करते हैं, वहां आ गया. ठीक है. अब मालवेयर एनालिसिस में भी हमारा टर्म होता है कि हंट थ्रेड को कैसे हंट करते हैं. दैट इज अनदर डिपार्टमेंट, दैट इज अनदर कोर्स फॉर दैट, हाउ यू गोना हंट दैट थ्रेड, कि प्रोसेस कहाँ से चली है, किसके थ्रू आई है, कौन सी सर्विसेज यूज करा, दैट कॉल द थ्रेड. जो भी प्रोसेस हुई है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, तो उसको कैसा हंट करना है, दैट इज द अनदर पार्ट. तो दैट इज द यू नो द चेन ऑफ द प्रोसेस, एक चेन. So now it's up to you if you want to just upgrade yourself, if you want to really want to go in depth in that area, तो आपको सब करना पड़ेगा. If you just want to upgrade yourself, just एक ही ठीक है, बहुत है, नॉलेज है, you can upgrade. अगर आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हो और CTI की कहीं जॉब निकली है, you can go for the interview, but I'm pretty sure they're gonna ask you in depth if you go for the interview. Definitely they will ask you. तो ये जो आप हंट करने वाली बात कह रहे थे, तो दैट इज थ्रेट हंटिंग और इंसिडेंट रिस्पांस, किसमें कहते हैं? देखो इंसिडेंट रिस्पांस दैट इज द गोइंग ऑन द सम इन द रियल टाइम. Okay, the hunting is the thing is done or is happening, then you have to hunting that threat, okay, what is actually going on and what just happened. तो यू आर टॉकिंग अबाउट थ्रेट हंटिंग ओनली ना? Yep. हाँ मैं सिर्फ थ्रेट हंटिंग की बात कर रहा हूँ. ठीक है, ठीक है, ठीक है, क्लियर हो गया ना सबको? ठीक है. Thank you, sir. ठीक Thank है. you. Any other query? Okay, welcome. Any other query, guys? अभी सर फिलहाल जैसे कॉलेज में है, उसके लिए सर्टिफिकेट्स गेन करने के लिए क्या करें? वाह वाह, तालियां हो जाए. ठीक है. I mean, Yes, sir. I mean, you're just a college student. If you're thinking about it to gain the certification, it's a really good idea. Okay, you can go for it. Until unless you don't have that knowledge कि भाई अच्छे से आता तो ठीक है. सर्टिफिकेट तो सिर्फ क्या है, एक एडमिट कार्ड की तरह होता है, पता है कि किसी भी कंपनी की जैसे रिक्वायरमेंट जेडी निकलता है तो वो एक्सप्लेन करते हैं कि भाई जो उनकी नीड है कि भाई बंदा बीटेक करना होना चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए, ये सर्टिफिकेशन होना चाहिए. ठीक है, दैट पर्सन इज एलिजिबल फॉर द इंटरव्यू, वो अप्लाई कर सकता है. बस इसी के काम आती है ये सारी चीजें. ठीक है. एट द एंड ऑफ प्लेसमेंट टाइम पर सर क्या है कि सर्टिफिकेट्स भी इज द वन ऑफ द मोस्ट क्राइटेरिया. देखो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ, तो आई डोंट गिव दैट मच इम्पोर्टेंस टू द सर्टिफिकेशन, टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज सर्टिफिकेशन इज जस्ट लाइक एडमिट कार्ड फॉर मी, कि आपको एक प्रोवाइड कर देता है एडमिट कार्ड. बट हाँ कि भाई एडमिट कार्ड होना चाहिए तभी आप एंटर कर सकते हो. फिर एडमिट कार्ड है, फिर उसके बाद नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर नॉलेज नहीं आती ना, दे विल, if you go for the interview, if you're trying to open your own company,
you will definitely face a lot of problems, definitely face a lot of question through the interviewers कि भाई अच्छा ठीक है इसने ये सर्टिफिकेशन कर रखा है, ये तो आता होगा। अब सर्टिफिकेट वही हिसाब हो गया, जब सर्टिफिकेशन है आता कुछ नहीं है तो स्टिल यू नॉट हायर्ड। सो फॉर यू यस यू कैन गो फॉर द सर्टिफिकेशन, बट जो भी सर्टिफिकेशन कर रहे हो ना, टू बी ऑनेस्ट, जो भी एक एरिया पहले, सबसे पहले ना एक की एरिया सर्च कर लेना अपना कि मेरे को ये पढ़ना ही है, मेरे को इसमें मजा आता है पढ़ने में और इसमें मैं फाड़ के रख दूंगा, आई मीन कि मैं इसमें बहुत परफेक्ट हो जाऊंगा। तो उस सर्टिफिकेशन को मैं बोलूंगा कि वो करना पहले, ठीक है, जिसपे आप कोई भी इंटरव्यूअर्स पूछे कि हाँ ठीक है, सो कि अपने आप को बेस्ट किस में देखते हो, देन यू कैन से हाँ मैं तो इसमें देखता हूँ, पूछो क्या पूछना है। दैट्स द मैटर। ओके सर। ठीक है, ओके, थैंक यू सर। ओके वेलकम। ओके Venkatesh, you were asked something, the session is great, चलेगा ही क्या? हाँ ठीक है, चलो फिर एंड करते हैं सेशन को। It's really nice to talk with you guys and I hope this session knowledgeable रहा हो आप लोगों के लिए, ठीक है। And some other person want to reach me out, they can reach me out through the mail, okay। And ठीक if you guys need any recording, and just again reach me out through the mail, I will provide the recording also, okay। And best of luck for your futures and just keep learning, okay। Life is just pretty good, I mean it's like a game, so just keep playing perfectly, okay guys। So let's end this session, okay। Thank you. Bye guys। Thank. Bye bye. Oh, welcome।